things that we aim to do and the first steps, I also believe, in order to secure ourselves, to understand this landscape, is awareness. And that's possibly the most important thing to start with, is to first become aware. And that's what, even as companies, we try and do with each and every employee. Just as you would try and secure your physical assets or your physical premises, it's extremely important now to understand how and what are the ways and means, what are the tools that will be available for us to secure everything, all our digital assets, and to ensure that each one of us, who is also in a way, every single person, every single employee who's working in the company, like you said, Subi, is possibly one of those, is like a gatekeeper. If they are relaxed, or if they open the door, then what can happen and what can enter, whether it is in terms of the threats that are there for our country, or large infrastructures, digital infrastructures, or even our own companies. This is something that is extremely important and very, very relevant for us. It's not something that is just good to have or good to know anymore. It's absolutely imperative that each one of us takes the first step towards this, and then starts on this journey to make all of our environment, the digital environments that we work and operate in, secure. So I think there's a lot that's coming up during the day, and the next session that Subi, you've talked about, I'm sure will be of great value to all of us. I would now like to request for a small memento to be given to Subi, to acknowledge the wonderful support that you've given us here today and the time that you're spending. Can we have the memento, please? Thank you. Can I now request Mr. Raghav Krishna, who is the chair of our very, very dynamic and vibrant Young Indians chapter in Lucknow, and also heads cybercrime IT and cyber secure IT, sorry, and one of the leading authorities on cyber security in the city, to give a vote of thanks. Thank you. Good morning, everyone. Thank you, Smita ji, for the kind introduction. So I take immense pleasure in thanking Dr. Shubhi Chaturvedi, Global SVP, Chief Corporate Affairs and Public Policy Officer in Mobi Group, Mrs. Smita Agarwal, Chairperson, CII UP State, and Director and CFO, PTC Industries Limited. Ladies and gentlemen, as we come to the close of this enlightening inaugural session on crime and data protection, it is my privilege to deliver a vote of thanks on behalf of the organizing committee. First and foremost, our deepest appreciation goes to Dr. Shubhi Chaturvedi. Your presence, engagement, and active participation have been instrumental in making this event a resounding success. The way you covered so many aspects of cybersecurity in such a short time is commendable. And the special aspect, I think, a good takeaway for us is to collaborate in this. Just like the red hackers are collaborating, we may collaborate. And the idea of leaving no one behind is one that we could take it ahead for the long term. We extend our heartfelt gratitude to our esteemed speakers, whose expertise and thought leadership have been in driving force behind this conference. Your captivating experience and informative sessions will provide valuable insights into the intricacies of cybercrime and information security. Your willingness to share your knowledge and experiences is truly commendable, and we will leave an inedible mark on our participants. I would also like to mention the aspect that Smita ji said, that this is no more an option for us. That is a compulsion that we have to make our organizations secure, to ensure the compliances are there, and to ensure that we have the trust of our customers with us. We would also like to express our deep appreciation to our annual sponsors, BL Agro, Triveni Almira, Goldie Masale, PTC Industries, Gyan Milk and Jackson, our conference partners, corporate partners in Mobi Glance, our exclusive banking partner, Bank of Baroda,
and associate corporate partner, Cyber Secure IT, whose support and generosity have made this conference possible. Your commitment to advancing the cause of cybersecurity is unwavering, and we are immensely grateful for your partnership. A special note of gratitude goes to the organizing committee members who have worked tirelessly behind the scenes to ensure the smooth execution of this conference. Your dedication, meticulous planning, and attention to detail have been instrumental in creating a seamless experience for all the participants. Your countless hours of hard work have not gone unnoticed, and we are indebted to you for your commitment and passion. In conclusion, we would like to express our deepest appreciation to everyone who has contributed to this conference on cybercrime and information security. Your collective efforts and unwavering commitment to the cause of cybersecurity have made this event a resounding success. We hope that the connections made, knowledge shared, and ideas sparkled during the conference will continue to have a lasting impact as we strive towards a more secure digital future. Thank you once again. We look forward to the future collaborations and continued efforts to combat cybercrime and protect our digital world. Thank you. Thank you, Raghav, for a very, very generous vote of thanks. Sorry, I missed this out. Hassan Yaqub is right in front and center. Hassan, if you can stand and wave. We're so committed to in Mobi and Glance's partnership and deepening everything that we're doing in Lucknow that we've left our finest and the best resource with over 20 years of leadership experience, especially across e-commerce. So Hassan leads all government engagement, industry partnership and leadership, and he's based right here in Lucknow. So I encourage all of you to please seek him out, reach out to him so that we can continue on our journey together. Thank you. May I request our speakers for a group photograph, please? We'll begin with our session 1, which is on navigating the nexus, exploring emerging threats, data privacy, and cybersecurity best practices in the digital terrain. I'll request all our distinguished speakers for this particular session to kindly join the dais. Mr. Rahul Goswami, General Manager and Head, HCL Tech. Mr. Vishal Vikram Singh, Additional SP, UP Special Task Force. Mr. Raghav Krishna, Chair CII Lucknow and co-founder Cyber Secure IT. Mr. Shailesh Kumar Srivastav, Senior Director, NIC and HOD Regional Center of Excellence. Dr. Pavan Kumar Chaurasia, Associate Professor, Department of IT, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University. We'd request all to please join the dais. May I now request Mr. Rahul Goswami to kindly take the session forward.
Good morning, everyone. First of all, a warm welcome to all of you from my side. And it's a pleasure to see this morning taking shape so beautifully that we all are feeling energized. My name is Rahul Goswami, and I'm working with HCL Tech as General Manager and Head of Business Marketing. It's a pleasure of mine that I received such a gracious invite from CII, and it's my first participation in CII from industry standpoint. So my huge round of applause for all the industry leaders and all the speakers who have joined here. And I look forward engaging with you along with my panel here, who will be speaking on the next reign of cybersecurity and how the world, which is continuously evolving, the world which is constantly chasing, is actually facing the dynamics of cybersecurity and how collectively we as industry body and government organizations and private industry bodies can tackle these challenges. Uh, it was a delight to hear from the senior leaders who were before us, the likes of Mrs. Smita Agrawal, Dr. Subhi Chaturvedi, and Mr. Raghav Krishna, and Mr. Alok Shukla. I think they set the tone very rightly at the beginning of the session that cybersecurity is not about tomorrow, cybersecurity is about today. So earlier we used to ask questions that if not now, then when? But now the tone has been completely changed. It's about now or never. So that's the world where we are moving into, that it's now or never. You can secure your ecosystem, you can secure your landscape now as the time has gone. Um, my upcoming panel, the topic of which is how to navigate and explore the emerging threats around data privacy, malware attacks, enterprise security, and delivering best frameworks uh, for the policy situations in the current economy. And that's why we are calling it Navigating the Security Nexus. We will have insightful sessions and topics coming from Mr. Raghav Krishna, chairperson of YI Lucknow and co-founder Cybersecure IT. Then we will have insights coming from Mr. Shailesh Kumar Srivastav, who is the Senior Director and HOD NIC, and of course, Mr. Pavan Kumar Chaurasia, who is Associate Professor in Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University. I wholeheartedly welcome them on the stage. Uh, Before we begin our panel, I, on behalf of CII, we are completely delighted to see the most important personality who has been not only securing our ecosystem, but who has been playing a very important role in securing our country, in securing our world. And he is none other than Mr. Vishal Vikram Singh. And I would like to invite him graciously for an opening keynote session and share his thought process with all of us. Mr. Vikram, please. Thank you, and very good morning to all of you. The IT revolution of late 70s and 80s basically galvanized the whole world. The fastest mode of communication facilitated huge sharing of data, sharing of information over the global platform. There was exponential rise in millions and billions in number of mobile users and the internet users. And due to this development, the whole world, this big world, was reduced to a global village. It brought various positive to humanity, but with one definite single negative, and that we call cybercrime. Cybercrime, in the simplest terms, a sort of crime where a gadget, maybe a mobile, laptop, where a simple electronic device is used as a tool and at the same time as well as the target.
And then n number of cyber crime. कई तरीके हैं इसको कैटेगराइज करने के. अगर हम इंडिविजुअल एक प्लेटफॉर्म पे देखें, साइबर क्राइम which haunts the individuals. For example, phishing, wishing, stalking, spoofing, etc., etc. When we see in the term of organizations, ransomware attacks, man-in-the-middle attack, financial crime, etc., etc. When we measure it in the terms of country, in the nation, then obviously cyber terrorism, the dark web nuisance, we all know. Again, if we define the cybercrime on a different vector, so cybercrime via internet, via websites, via mobile phones, via social media platform, and number of ways. Type of cybercrimes and number of. कोई भी लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट बचा नहीं है जहाँ पे साइबर क्राइम ने आज की डेट में हमको पेनिट्रेट ना किया हो. OLX पे जाओ तो वहाँ फ्रॉड है, वीडियो कॉल पे आओ तो वहाँ से एक्सटॉर्शन कॉलिंग है, ठीक है. ऑनलाइन जाओ तो ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है, इंश्योरेंस में जाओ तो इंश्योरेंस फ्रॉड है, फेक प्रोफाइलिंग है, इम्पर्सोनेशन के थ्रू फ्रॉड है. Sorry, I fail to find any single sphere of our life which is not affected by cybercrime. Everywhere it has got its footprints. दो तीन एग्जाम्पल्स मैं, अच्छा हाँ, रीजन बिहाइंड द साइबर क्राइम in a very simple manner. Number one is your greed, our greed. Number two, the fear. Number three, reputation. Number four, the least, lack of knowledge. थोड़ा बहुत. And the motive behind all these sort of cyber crimes. आप किसी भी साइबर क्राइम को उठा लो, किसी भी टाइप ऑफ मॉडस ऑपरेंडी जो भी हो, तरीका जो भी हो, मोटिव इज टू फाइनेंशियली एक्सटॉर्ट यू, टू रॉब यू ऑफ योर मनी, योर हार्ड अर्न मनी. फेक प्रोफाइलिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नाइजीरियन फ्रॉड. They used to create fake Facebook profile, especially they target the girls or ladies. दोस्ती करते हैं, उसके बाद एक दो महीने हो जाते हैं, then they promise to send you a bouquet of gift from abroad. गिफ्ट आता भी है अच्छा खासा भारी भरकम, फिर एयरपोर्ट पे गिफ्ट somehow stuck up हो जाता है. Then airport authority, sometimes lady, sometimes some gentleman, being the custom officer, they used to call you कि मैं लाइव केसेस शेयर कर रहा हूँ आपसे कि मैडम आपका ऐसे ऐसे ये गिफ्ट है, बट सॉरी टू से इसके मतलब कॉस्टली गिफ्ट्स हैं तो इसके कस्टम क्लियरेंस चार्जेस आपको बियर करने पड़ेंगे. तो लेडी इज ऑलरेडी कन्विंस्ड, वो लेडी उसको ऑनलाइन जिस भी मोड से पैसे पे करती है. इट मे बी 50,000, 1 lakh, 1.5. Again, when she didn't receive the packet, again she calls the custom authority. तो वो बताता है कि मैडम ऐसा है कि इसमें जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में पाउंड्स हैं जिसके कन्वर्जन चार्जेस भी आपको बेयर करने पड़ेंगे इफ़ यू आर रेडी टू बेयर दैट. क्या करें? Here the greed factor comes. साला लाखों का गिफ्ट है कि करोड़ों का है पता नहीं, तो क्यों 1,50,000 के चक्कर में नुकसान किया जाए. फिर 2 लाख 1.5 लाख जो भी मांगा उसने दे दिया. अगेन गिफ्ट नहीं आता है. इस बार उधर से कॉल आती है कि मैडम आपके जो ये पैकेट है इसमें से 20,000 जो है वो पाउंड्स निकले हैं जिसकी कॉस्टिंग ये है और ये लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में आता है. देन वी हैव टू रिपोर्ट द CBI एंड द RBI रिगार्डिंग दिस. ED ऑल्सो. जो नाम
आप सुन के घबराते, वो सारे नाम उसमें ऐड ऑन होते जाएंगे। ठीक, तो लेडी ने चलिए ईडी और उसको मैनेज करने के नाम पे फिर पैसे दिए 4 लाख 6 लाख से, फिर गिफ्ट नहीं आता। अगेन लेडी कॉल्स, मैडम ऐसा है कि इसके लिए जो एनओसी चाहिए वो हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी, जिसके लिए हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू आर रेडी टू पे द ड्यू फीस, तब हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अगेन इट टुक द मनी। फाइनली करते करते इट वाज अ fraud around 32 lakh in one case and 58 lakh in another case। ये हुआ था। बाद में केसेस को वर्कआउट किया हमने, और वो नाइजीरियंस वी सेंड देम बिहाइंड द बार्स, और उनका जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल किया, पासपोर्ट इम्पाउंड किए। 2 लेडी जो मैं कोट कर रहा हूँ, वन इज प्रोफेसर फ्रॉम द रायबरेली एंड वन इज द सर्जन इन पीजीआई। ठीक है, जिनके ऊपर नॉलेज वाला वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस केस में क्या रीज़न हो सकता है, यू बेटर अंडरस्टैंड, सारे ही मैच्योर हैं। इम्पर्सोनेशन का एक केस मैं साइट करता हूँ, लखनऊ का मैं बताता हूँ, आप उससे ज़्यादा कनेक्ट होंगे। ये कोविड पीरियड की बात है। यहाँ पे फैजाबाद रोड पे बेंज मोटर्स है, उसके साथ एक हुआ था, और एक बालाजी मोटर्स हैं किया, दोनों के ओनर्स के साथ हुआ। होता क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को कॉल आता है ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस कि मैडम आई एम एमडी ऑफ दिस जो बेंज शोरूम है, दिस एंड दिस, सम पांडे या नवनीत पांडे किया मोटर्स के थे और बेंज के कोई और थे, और we have 4 to 5 employees hospitalized in this hospital। इनका क्रिटिकल जो है उनकी लाइफ क्रिटिकल उसमें है, एंड आई अर्जेंटली नीड दिस अमाउंट ऑफ मनी। अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट ऑफ माई चेक बुक्स, नो अदर वे ऑफ गार्नरिंग द मनी, सो आई विल गिव यू ऑन माई लेटर पैड, and you better add these 4 to 5 accounts as the added beneficiary to my account and transfer this amount of money to my account so that I may be able to save my employee's life। At most बैंक मैनेजर क्या चेक कर सकती थी, ट्रू कॉलर पे ओनर का नाम डिस्प्ले हो रहा था, फोटो भी उसकी लगी हुई थी। अगेन जो मेल उसने किया बालाजी मोटर्स या मर्सिडीज बेंज की बिहाफ पर, वो सारी की सारी मेल जो थी उनके पास, जो भी उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी कंपनी के स्टैम्प थे, उसके सिग्नेचर्स थे, वो सारी मैच करते थे। तो सेटिस्फाई होकर दैट लेडी एडेड दोज अकाउंट्स एंड ट्रांसफर्ड दैट अमाउंट ऑफ मनी विच वाज कलेक्टिवली अराउंड 34-35 लाख। और जब ये पैसे कट होते हैं और तब ओरिजिनल जो एमडी है उसका कॉल आता है मैनेजर को, हाउ कम दिस अमाउंट ऑफ मनी गॉट डेबिटेड फ्रॉम माय अकाउंट। सर यू जस्ट मेड अ कॉल हाफ एन आवर बैक एंड सेंड अस योर रिक्वेस्ट, यू कॉल्ड मी एंड ये आपने मेल की है, आपको ऐसे ऐसे डायर रिक्वायरमेंट थी। बोले नहीं ना, मैंने कोई कॉल की ना मैंने कोई मेल किया आपको। तो दिस वॉज द फ्रॉड थ्रू इम्पर्सोनेशन। अब आप सोचोगे कि मालिक के बारे में इतनी सटीक इंफॉर्मेशन फ्रॉडस्टर्स को कैसे लगी। फ्रॉडस्टर्स वे फ्रॉम बिहार, तो उनका काम ही है दिन भर का, उनको बहुत कुछ करना नहीं है। आप ही के सोशल प्रोफाइल से, आप ही के फेसबुक से, आप ही के इंस्टा से, वो आप ही की पूरी लाइफ स्टाइल जो है खोद के निकाल लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा स्मार्ट हुआ तो चला जाएगा मर्सिडीज के शोरूम में या किया के शोरूम में, वहाँ लोन पे इंस्टॉलमेंट पे वो करेगा, बुकिंग कराएगा, और वो सारी डिटेल उसको लेटर पैड पे वहाँ की मिल जाएगी, जिससे वो सिग्नेचर भी कॉपी कर लेगा, लेटर पैड हेड भी कॉपी कर लेगा, और फिर उसको आप ही के खिलाफ यूज़ करेगा। और खूबसूरती ये है कि जब ये पैसा
जितनी देर में ये पैसा निकाला, मतलब 35 लाख रुपए इसने निकाले और अगले 35 मिनट के अंदर हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों से ये 35 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए गए। इनके पास अगर यहाँ पे बैंक के लोग हों तो ये उनके लिए खास अलार्मिंग है कि 100,000 ऑफ नंबर्स ऑफ जो फेक अकाउंट्स हैं वो ऐसे क्रिएट किए जाते हैं विदाउट चेकिंग द आईडी एंड द KYC। गॉड नोस कैसे वो करते हैं। अभी हमको एक अकाउंट खुलवाना हो, आपको खुलवाना हो, तो 10 बार चेक करेगा, ठीक है। एन नंबर ऑफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं इंडिया के किसी भी कोने में। इस केस में पैसे निकले कहाँ से? लखनऊ में फ्रॉड हुआ, पैसे कहाँ निकल रहे हैं? मालदा में, गोपालगंज में, अहमदाबाद में, सूरत में, हर जगह उन्होंने अकाउंट खुलवाए। रेंटल पे लिए अकाउंट। दो तरीके हैं फेक अकाउंट खुलवाने के। आप तो फेक KYC पे अकाउंट खुलवा लेते हो, दूसरा गरीब आदमी को खुलवा लो, उसका अकाउंट आप रेंट पे ले लो, तो उसका ATM, पासबुक, व्हाटएवर, पिन सारा आपके पास है। अपना बंदा आपने भेजा, अकाउंट में पैसे इधर से फ्रॉड वाले ट्रांसफर हुए, वहां से आपके आदमी ने पैसे निकाल लिए। तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ नेक्सस दे हैव। डीप फेक और AI पे अभी मैडम ने बहुत अच्छा बताया। तो AI इज द लेटेस्ट, क्या कहें इसको, बून कहें या बेन कहें फॉर आवर सोसाइटी। अभी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रॉड्स हो रहे हैं वो AI पे हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट सुना है बहुत, अभी पेपर में निकल रहा है। सबसे पहले हमारे ही एक जानने वाले के साथ हुआ था। तो डिजिटल अरेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि स्पेशली फेडेक्स कुरियर का बहुत यूज़ करते हैं वो, कि फेडेक्स कुरियर के नाम से कॉल आएगी आपको और ये और बोलेगा कोई लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ और आपका जो आधार है वो इस ड्रग पैकेट के साथ अटैच मिला है। सो मैं आपको नारकोटिक्स NCB मुंबई से कनेक्ट कर रहा हूँ। अगली कॉल NCB मुंबई के ऑफिसर से होती है, वो आपको खूब धमकाएगा। अब आप तब तक समझ पाओ कि आपने कुरियर मंगाया था, नहीं मंगाया था, आपका आधार कार्ड कैसे पहुँचा। इन बिटवीन वो आपको फिर स्काइप पे डाल देगा और फिर वो CBI से कनेक्ट कराएगा। फिर CBI ऑफिशियल विल रिव्यू कि ऐसे 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 आपका ये फ्रॉड बनता है। जब तक आप कुछ समझो तब तक आपकी मेल पर CBI की एक वारंट ऑफ सॉर्ट ऑफ चार्जशीट आ जाएगी, ठीक है। CBI वाला फिर उठा के इन बिटवीन जब तक आपको समझते हो RBI से कनेक्ट करा देता है। RBI ऑफिसर वो आपको प्रेशराइज करता है कि ऐसे कि जो भी मनी है आपके अकाउंट में, इसको राइट नाउ ट्रांसफर टू दिस अकाउंट ऑफ RBI, और आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन से हाफ एन आवर 1 आवर, ये सारा अगर कुछ भी फिशी नहीं मिला तो आपके अकाउंट में चला जाएगा। एंड यू शेयर इफ दिस एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विथ एनीबडी इवन इन योर फैमिली, तो ऑल ऑफ यू विल बी अरेस्टेड बुक्स अंडर दिस नारकोटिक्स एक्ट, नेशनल सीक्रेट एक्ट। अभी 10-15 दिन पहले की बात है, लखनऊ के ही एक सीनियर सिटीजन से, उसको इसी नेशनल सीक्रेट एक्ट के नाम पर इन्वेस्टिगेट करने के नाम पर 30 लाख रुपए उनसे एक्सटॉर्ट कर लिए गए। खैर, और तब तक के लिए वो आपको डिजिटल अरेस्ट पे रखते हैं। मतलब यू कांट लीव योर फोन। अगर आप लैपटॉप पे हो तो यू कांट लीव योर लैपटॉप। टाइम कितना भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 24 घंटे, 48 घंटे तक की कंप्लेंट है मेरे पास कि लोग हेल्ड अप रहे डिजिटल अरेस्ट में। AI में मेरे ख्याल से आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन वेरी मच, आपने काफ़ी कुछ बता दिया मैडम चतुर्वेदी हु वाज अर्लियर ओवर हियर। तो बस आपको इतना वॉचफुल रहना है। अब आपको पता है कि मोदी जी का भी AI बन रहा है, मतलब डीप फेक्स बन रहे हैं, और क्या बोलते हैं, रश्मिका मंदाना के ही बन रहे हैं। तो यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ कि असली रश्मिका है कि नहीं, असली मोदी है कि नहीं। तो लाइकवाइज ये आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड की तरफ से बेसिकली डिस्ट्रेस कॉल होती हैं। दैट मे बी अ वॉइस कॉल, दैट मे बी अ वीडियो कॉल, ठीक है। अगर आपने उसको टाइमली आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि
जो वीडियोस होते हैं वो हाईली सोफिस्टिकेटेड मोड ऑफ होते हैं, वो पता चल जाते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी उसको प्रॉम्प्टली और डीपली ऑब्जर्व किया तो पता चल जाता है। बट सॉरी, जैसा मैंने बताया कि ये इंटायरली डिस्ट्रेस कॉल होती हैं और ऐसी सिचुएशन में होती हैं या ऐसी फ्रेम ऑफ माइंड में विक्टिम होता है कि वो बहुत आसान नहीं हो पाता उसके लिए कि ये डिसाइड कर पाना इज इट रियल और फेक, और लोग जो है वो विक्टिमाइज हो जाते हैं डीप फेक का। अभी लेटेस्ट हम लोगों ने किया महादेव ऐप जो स्कैम चल रहा है उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है उस पर चली गई थी। तो महादेव का जो इंडिया हिट था प्लस वन ऑफ हिज accomplice, वी गॉट हिम अरेस्टेड मेरे ख्याल से 1 month बैक। खैर वॉट एवर, जो पूरा का पूरा उनका नेक्सस है, ईडी इज ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस since last 1.5 year, and Chhattisgarh police too. But we got the source। ये करते कैसे हैं? बेसिकली ये इलीगल ऑनलाइन बेटिंग है, जो इंडिया में तो इलीगल है, तो इसलिए सारा ऑपरेशन जो है वो यूएई से होता है। You won't believe, अगर people from TSP are also here, more than 4,000 SIM cards, corporate SIMs, were issued in the name of almost 35 to 40 OPCs, the one-person companies, जिनके credentials अभी हम check कर रहे हैं, and these SIMs were issued by the company, allotted to these OPCs, gathered by this guy, and were routed to UAE. Presently, they all are active in UAE. Maybe हमारी रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको डंप कर दिया हो, बट टिल द ऑपरेशन ये स्टेज थी। तो आप समझ सकते हो कि एक एक सिम की वेरिफिकेशन आपकी लाइव की जाती है, फोटोग्राफी लाइव की जाती है। तो कॉर्पोरेट सिम्स इस अमाउंट में, इस क्वांटिटी में इशू करना और जिसका इतना बड़ा मिसयूज होना, ये सारे के सारे इस इलीगल बेटिंग और गेमिंग में यूज हो रहे थे। मेरे ख्याल से 150 वेबसाइट जो हम लोगों ने अभी तक खोजी थी वो सारी, और हम मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट ईडी ने जब रेड की, जब महादेव ऐप को बैन किया, तो उससे मिलते जुलते कम से कम 20 साइट्स और ओपन हो गई। मैजिक विन दिस, महादेव दिस, साउथ के नाम पे। और मज़े की बात है कि हमारे यहाँ जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मे बी मीडिया से, क्रिकेट से, दे ऑल यूज टू ऐड अबाउट देम। आप इंस्टा खोल लो, फेसबुक खोल लो, अब महादेव खोल लो, आप देखो आपको 100 ऑफ उसमें क्रिकेटर्स भी मिल जाएंगे, सेलिब्रिटीज़ भी मिल जाएंगे जो कि उसको प्रमोट कर रहे हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट कि ये किस तरीके से हमारे जो पैसे हैं उसको एक्सटॉर्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो दिस इज ऑलमोस्ट द होल सिनेरियो ऑफ दिस nexus cybercrime, and the way the society, the individual, the country got affected by this. So how to get rid of it? Obvious सवाल होता है। तो 2 लेवल पे है इसका सोल्यूशन। एक सोल्यूशन तो है जो गवर्नमेंट हमको देती है कि whenever you become a victim of, or you think that you might be victimized, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो है, वेबसाइट है cybercrime.gov.in, मेरे ख्याल से सारे ही पता होगा आपको। सेकंड वन इज द टोल फ्री नंबर, दैट इज 1930, जिस पे आप कॉल करके अपने रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज cybercrime.gov.in. Apart from that, there's a portal of Government India named Sanchar Sarthi portal. It's new and quite effective one.
संचार सारथी पोर्टल पे जब आप क्लिक करोगे तो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज का एक विंडो खुलेगा, और जब आप उस पर जाएंगे तो दो उस पर आपको प्लेटफॉर्म शो होंगे। एक होगा DIP यानी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, एंड द सेकंड वन इज चक्षु। चक्षु जिसको आंख, आइस कहते हैं, चक्षु पोर्टल है। जब आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, देन फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ दैट फ्रॉड यू कैन यूज दिस DIP प्लेटफॉर्म। और जब आपको लगता है कि आपके पास स्कैम कॉल्स आ रही हैं या जो कॉल आ रही है वो फेक फ्रॉड हो सकती हैं, तो आप फिर चक्षु पोर्टल पे आप रिपोर्ट करोगे। उस पर बेसिकली कुछ वर्ड्स में आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी, एक दो क्वेरीज वो आपसे करते हैं, और देन उस पर जो सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उस पर तुरंत एक्शन लेती हैं। जो ओनर ऑफ द नंबर है उसका KYC वेरिफिकेशन होता है। इफ इट इज़ नॉट डन इन 2 or 3 days, देन जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है वो उसको तुरंत ब्लॉक करेगी, और जो भी उसका ओनर है समहाउ उसको दे विल ट्राई टू फाइंड हिम आउट। ऐसे करके कम से कम अब तक मेरी नॉलेज में 2-2.5 लाख नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया है। ऐसे ही फेक वेबसाइट्स भी हैं, करीब 250-300 वेबसाइट्स तो हम लोगों ने ही बैन कराई हैं। तो दिस इज़ ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट सब कुछ आपके लिए नहीं कर सकती, कुछ आपको भी करना होगा, ठीक है। तो हमको आपको क्या करना है? कैन एनीबडी टेल? हाँ, जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है वो भी अवेयर ही रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में बस थोड़ा सा अलग, वो तो फ्रॉड होने की बात है। हाँ, ये भी है। There's a word मैं कभी कभी यूज करता हूँ, दैट इज साइबर हाइजीन। जैसे हमारी हेल्थ के लिए हाइजीन ज़रूरी है, हम वो हर काम करते हैं जिससे हम हेल्दी रहें, ठीक है। द सेम इज इन द साइबर वर्ल्ड। द मोमेंट यू डिसाइड टू नेविगेट इन द साइबर वर्ल्ड, the moment you want to make your presence felt in the digital terrain, there's one mantra which you have to follow each time, each and every time, and that is the cyber hygiene and the cyber discipline. Cyber hygiene is the hygiene of your gadget which you use, your mobile, your laptop, your desktop. आपको ये देखना होगा कि आपके सॉफ्टवेयर अपडेटेड हैं, आप जो भी साइट्स यूज़ कर रहे हो स्ट्रांगली पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फायरवॉल इनेबल्ड है, हार्डवेयर्स आपके इंटैक्ट हैं, अपडेटेड हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, तो दे आर वेरी मिनिमल चांसेस कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हों। नंबर टू इज साइबर डिसिप्लिन। जिस तरह एक सफल जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ डिसिप्लिन, अनुशासन जरूरी है, उसलिए एक सफल साइबर लाइफ जीने के लिए साइबर डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। साइबर डिसिप्लिन में कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आपको ओपन सोर्स वाईफाई नहीं यूज़ करना है। और क्या नहीं करना है? कोई भी अनवांटेड अनइंटेंडेड वेबसाइट्स या मेल क्लिक नहीं करना है। और क्या नहीं करना है? अनवांटेड कॉल्स नहीं चेक करनी है। और क्या नहीं करना है? अपने OTT CVV वॉटेवर जो भी है, तमाम सारी चीज़ें बहुत दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोज़ आपके वेबसाइट पे भेजती है, याद हो गया होगा। और क्या नहीं करना है? हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करने हैं। और अपनी कहीं घूमने जा रहे हो तो वह आइटिनरी पूरी पोस्ट नहीं करनी है, नहीं अगले दिन आपके घर से चोरी हो जाएगी, आपको यहाँ पे गोमती नगर में पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यूज़ अ वेरी सेफ एंड मिनिमल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया और ये दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। द रीज़न बिहाइंड दिस कि आप फिजिकल लाइफ में जो एक्टिविटी करते हो, घर में करते हो तो घर वाले देखते हैं, बाहर करते हो तो पड़ोसी देखेगा।
यहाँ करोगे तो पूरी दुनिया देखेगी, ठीक है। और वंस यू पोस्ट समथिंग इन द पब्लिक डोमेन, यू जस्ट कांट टेक इट बैक। आप उसको वापस नहीं ले सकते। फिर आपको रिएक्शंस जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आएंगे। आपकी जो भी कमियां होंगी दैट विल बी एक्सपोज टू ऑल। आपका जो भी डेटा होगा दैट विल बी मिसयूज्ड। हम सब का डेटा डार्क वेब पे कहां कहां घूम रहा है हमको कुछ नहीं पता। लास्ट टू लास्ट ईयर 81 करोड़ जो था कोवैक्सीन का जो डेटा था, कोविड जिनको वैक्सीनेशन हुआ था, ICMR का डेटा वो हैक हो गया। और हर इस डेटा की एक कीमत है। हमारे लिए ये हमारा नाम, पता, फ़ोन नंबर है, पर जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, जो डार्क वेब ऑपरेटर्स हैं, तो सब इस डेटा को एक कीमत, इसकी एक प्राइस वो करते हैं, टैगिंग करते हैं, और वो प्राइस ली जाती है। एक डेटा की कीमत अगर 5 रुपये हो तो ऐसा सोचो करोड़ों अरबों का डेटा, उसकी क्या प्राइस होगी। और उस हिसाब से ये जो मल्टी नेशनल शार्क मेगा कंपनीज हैं वो अपनी फ्यूचर पॉलिसीज प्लान करती हैं, ठीक है। तो अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी कृपया करके उसको जस्ट डोंट थ्रो इट आउट, यूज इट एंड यूज इट प्रीटी वाइसली, ठीक। आई थिंक आई एम डन हियर। थैंक यू सो मच। I think this is called the real life examples of day to day that actually make you aware and bring you out from the sleep at what is happening around the world and what is required, what is not required. I think with this, I would like to start the panel session. The objective of which is to kind of discuss the larger trends that are shaping up the cybersecurity space and what all initiatives, what all steps, what all technologies, what all policies are required to be framed to kind of address those trends and emerging challenges. So I would like to start this panel session by asking question number 1 to Mr. Raghav, that what are the prevalent trends seen in the proliferation and advancements of cyber threats, ransomware, phishing attacks, insider threats, malware, etc., and how leading industry experts like you and system bodies like CII and private bodies are taking proactive and preventive measures to neutralize those attacks? Thank you, Rahul. Thank you for the question. So I think the latest trend is the AI. Earlier, the threats which were happening, the attacks which were happening were majorly manual. So they were not only manual, obviously softwares were there in which people were working. But now with the introduction of AI, now there is no one sitting at a back end and observing what is happening. So widely the viruses are spreading, the malwares are everywhere. So AI as a boon we see, but there's a negatives of AI as well, which is I think very prevalent these days, and we have to be very secure about them. And regarding the preventive measures, I think the Data Protection Act, which has been coming up, it's a great step towards that. The act is coming, it covers a lot of things. Currently PII, we don't focus much on PII, personal identifiable information. So currently there is no focus on that. I get call on a daily basis from Bajaj Finance and multiple agencies regarding loan chahiye or something or other. But with this Data Protection Act coming up, which government is bringing in, I'm sure all the organizations will start focusing on these minor things and eventually train their human resources, which are the weakest link, I think, in any system, and eventually grooming them to be a better and responsible employees. I think a very good point, Mr. Raghav, and I would fully agree with you. And I would also like to kind of make a point here that the cyber trends and challenges are not static. They're actually changing on daily basis. So the kind of proactiveness, the kind of preventive techniques that needs to be devised. I think the organizations, the global bodies are also putting up so much effort to kind of make sure that the
procedures and those frameworks are up to date, up to millisecond. So yeah, fully agree with your point. I would like to go to Mr. Shailesh ji now. Shailesh ji, you have been associated with NIC for good time now, and I would like to kind of hear from you that what are your viewpoints on the technology transformations uh, that are being seen to address and combat those privacy insinuations or data stealing, especially when cybercrime is expected to grow in the era of Gen AI and AI-based uh, copyification. Thank you. First of all, thank you for inviting me here. And it's a great combination of the panelists. One is from academic side, one is from industry side, one is my ASP Sahab, who is all the cyber crimes discussion. As far as government is concerned, AI or generative AI is, as ASP Sahab rightly said, it is a dodhari talwar type की चीज हो रही है. However, it is very useful for the energy, for the industry, for the useful like robotics and all other health point of view. But the misuse as is going on the AI is quite like in the recent. I am also looking after the election. I am the state head of the IT for the election purpose, and we had seen the video of Amit Shah. That is a deep AI fake जिसमें उन्होंने कुछ statement दिया और वो उसका बड़ा massive effect हुआ. So government is. If you remember, Prime Minister Mr. Modi has initially said that this election में ये problem आएगा. So government as a NIC, we are saying first of all we need to build an ecosystem, because AI or generative AI is nothing but it's a continuous learning of the anything, and AI itself nothing, but it's the basis of the how which we learn to them. कितना उसको हम सिखाते हैं और कहाँ से सिखाते हैं, हमारे अपने इनपुट से ही सिखाते हैं. So the basic important thing is to build an ecosystem, as rightly Professor Dr. Shubhi has initially pointed out, it because it is not the only government job. Government can do initiative, but with the collaboration of the private partnership, we need some solutions, we need some innovations who can immediately say that this is a fake video or this is a generative AI model. Because what generative AI said, chatbot is there, and a lot of things is coming who will giving the answer immediately from the learning resources. And that resources which they are producing the answer is not claiming anything whether it is correct or not. It may be totally false, but answer is there. And academic point of view say, the students are learning those things. So first of all, we need to build an ecosystem in which all partners, all industry partners should come. Government is already doing a lot of things, like in Government of India, we are, as totally said, UPAI model, and NCST model is there also, in which we are trying to build such type of model in which we can learn, we can educate our population also to how to believe and how not to believe. And simple and safe thing is, one thing is technology, other thing is awareness, and third thing is to understanding the concept behind it. If we all three grouped ones together, we can certainly leverage, we can certainly win over this. But anyhow, we need to care about it. And government is already in the plan of it. We are already developing all the ministries. There are, in every ministry, we are deploying a separate security cell, cyber security cell, in which one CISO is there, one deputy CISO is there, and a cyber expert is there, whose job is to control all these things. In Ministry of MHA is quite forward for it. Other ministries are also following it. So as far as AI, generative AI, or any technologies you are telling, we need to aware of it, we need to collaborate of it, and only then we can think something to overcome all this issue. Very valid points, sir. And I would like to kind of state some facts here. That cost of ransomware attacks is projected to reach 2.6 billion USD by 2031. That is in the next 7 years. And because of the era of connected ecosystems, where I think everybody is 24/7 on laptops or computing devices or mobile devices. So data is actually moving from one end to another end. So this is actually leading to channels which can be hacked, and these connected channels which when get hacked,
by the experts anywhere in the world. They cause more havoc than you can even think of. So now in this era of cybersecurity, I think everybody is making consensus on the fact that consumer data and IP is important. I would like to ask a question to Mr. Vishal sir, that do you think that the change that COVID brought primarily around remote workforce management, or the fact that everybody started working from their own comfort zone, in their own remote zone. So the strategies or the provisions that got built, that you are encouraging remote work management, is that going to stay for forever? And how the platforms or technologies like VPNs or strong collaboration tools need more innovation than ever? फर्स्ट वाला पोर्शन आपका क्या था कि ड्यू टू कोविड? Because of COVID, everybody or most of the people started working remotely. कोई अगर अपने होम टाउन से काम कर रहा है, कोई अपने कंफर्ट जोन से काम कर रहा है. So do you think that kind of model, working model, is going to be the future of the working economy? And if yes, then to sustain that kind of model, the technology needs more innovation than ever. So your thoughts on that? Actually, no single model is always कह सकते हैं हमेशा सजेस्टेबल नहीं रहता. हमेशा हमको एक हाइब्रिड अप्रोच की बात करनी चाहिए. तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जिसको हम कहते हैं, तो सेम इज इन इंडस्ट्री, पॉलिसी, साइबर, एवरीवेयर. अगर हम किसी एक पे हैंग अपॉन करते हैं, किसी भी एक टाइप पे, तो अगर हम साइबर क्राइम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं, तो हमेशा अगर कोई भी लूप होल अगर उसने निकाल लिया, कितना भी रॉबस्ट सिस्टम हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज इवॉल्व्स, टेक्निक इवॉल्व्स सर, पॉजिटिवली एज वेल एज द नेगेटिवली. तो आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा. तो ऑलवेज अ हाइब्रिड मॉडल इज मच बेटर. खाली पेट्रोल पे गाड़ी चलाओगे तो फिर कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगी उसका रिसोर्स. तो पेट्रोल के साथ साथ डीजल भी, सीएनजी भी और ग्रीन हाइड्रोजन भी और मल्टीपल ऑप्शन. तो आई थिंक ए मल्टी प्रॉन अप्रोच इज मच बेटर देन अ सिंगल वन. एंड ऑब्वियसली जो भी सिस्टम हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसके लिए, जैसा कि आपने भी कहा सैलेशन, एक प्रॉपर इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट होना चाहिए. दैट इज़ नॉट ओनली द सोनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप बेसिस पे ही काम होना चाहिए, हो भी रहे हैं. ठीक है. प्रॉब्लम थोड़ा सा हमारे यहाँ क्या है कि एट द सेम टाइम वी आर डिजिटाइजिंग आवरसेल्फ. तो हम डिजिटाइज भी हो रहे हैं, हमारा सिस्टम भी इवॉल्व कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली हमको उससे प्रोटेक्शन में ढूंढना पड़ रहा है. कई काम एक साथ चल रहे हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टेज ऑफ ट्रांजिशन स्टेज, जिसको कहते हैं संक्रमण काल. हर देश इससे गुजरता है, फिलहाल हम गुजर रहे हैं. ठीक है. तो एक बार एक जो कटिंग एज है वो आ जाएगी, जब अब हमको डिजिटाइज भी करना है, हमको सिस्टम को ऑनलाइन भी करना है और साथ ही साथ हमको उसको प्रोटेक्ट भी करना है. तभी हम वेबसाइट्स बनाने में बिजी हैं और क्या बोलते हैं, जो उसका जो प्रोटेक्शन वाला एंड है, साइबर सिक्योरिटी वाला एंड है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान अभी तक नहीं गया था, अब जा रहा है. वेबसाइट्स हमारी कितनी सेफ सिक्योर हैं, सिस्टम्स हमारे कितने स्ट्रांग हैं. तमाम कई केसेस हुए हैं जिसमें रैंसमवेयर अटैक हुए, यूपीएसआरटीसी में हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी हुआ, एक दो वेबसाइट्स पे. अनफॉर्चुनेटली यू कांट डू मच. तो आई थिंक दिस इज द हाई टाइम वी शुड टेक केयर, वी एज अ होल, एंड गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ इट. तो एक सेफ, साउंड, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, साइबर एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें हम सब सेफली नेविगेट कर सकें. थैंक यू. Thank you so much. I think everybody is talking about the cyber world, but the important aspect that we are you have a question, anybody? Okay.
Hello, sir. Sir, I am Vinod Pathak from PRGenix. Actually, we are closely working with the National Health Authority, and they have a sandbox environment, as Subi introduced us earlier, that every department should have a sandbox environment for cyber security, and there we have to work according the all the measures for security. In that cases, do you have, I think I want to ask you that in police department, in cyber security, are you implementing any sandbox like environment for to tackle all these issues? ये तो confidential है, can't share. No, sir. I think if private parties are going to involve there, because if we are हमारे यहाँ internet private service party की provider, limit है. sorry, हमारे यहाँ private parties की एक limit है. उस limit के बाद वो intervene नहीं सर मैं लिमिट की बात नहीं कर रहा हूँ. सपोज ISP प्रोवाइडर्स हैं और आप हमारा छोड़ के internet- अपना पूछो ना यार. एक्चुअली हम ऐसे NHA ने आपको, हम लोग NHA so Abha is like Aadhaar card, we can say, and there we are integrating and connecting all the health data of person with that Abha. So they have created a sandbox environment, and for that we are using, like if you are using anybody, any private organization want to use that data, so they have to go BAPT test and cyber security and certain certification for that. In Uttar Pradesh, all the websites, as I say, 100% private websites are, they are following any security measure. 90% websites in UP are on WordPress. We can say that these are applicables. For that, I think a framework should be there. हाँ है फ्रेमवर्क बाकी इसका भी है. अब NHAI का क्या सिस्टम है जो आप डिस्कस कर रहे हो? अनफॉर्चुनेटली मेरा NHAI से कोई इंटरेक्शन नहीं रहा कभी. बाकी और अगर किसी का होगा दे कैन बेटर स्पीक अबाउट इट. और रही बात जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स या थर्ड पार्टी VAPT या साइबर ऑडिटिंग की बात करो, दैट्स व्हाट आई वाज स्पीकिंग अर्लियर अबाउट इट कि we are digitizing at the same time we are also adopting the latest security protocol जिसमें आपका third party और independent cyber audit आता है. They all are following it more or less. ठीक है. Sir, actually CNHA means this AVDM, Ayushman Bharat Digital Mission. They are also using this name. So I think we will be taking more questions later towards the end of the panel. But I think everybody is talking about the cybersecurity ecosystem and landscape. But I think another aspect that needs to be focused upon is the manpower availability, who will be working on the technologies and the tools and frameworks. And we have been also hearing that there is a significant shortage of approximately 2.72 million people that is going to be the next 10 years. My question goes to Mr. Pavanji. Pavanji, you have been in academics for a long time now. How do you see the interlinking between academic bodies and industry bodies, framing policies around cybersecurity and importance of setting up institutional mechanisms around cyber resilience? First of all, I would like to give thanks to CII team for inviting me. For academic purpose, actually, I'm from Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Central University, Lucknow, in Department of IT, and we are running MSc Cyber Security course. Basically, we are running evening course for especially for working peoples who can attend the class after 6 or 5 o'clock and then till 8 p.m. And one of my student here who is completed and then after that started its own company.
as well as one of from police department, sir, know very well ADG of UP, SM Thirde, sir, who also completed MSc Cyber Security from our university and topper of the university. तो उन्होंने भी वहीं से कोर्स किया और जहाँ तक इंडस्ट्री पर्सन्स की बात करें हमने कोलैबोरेशन भी किया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 there is a provision for collaboration with the industry persons when we have to design the course. There is a provision at least one industry persons have to collaborate for at that time of designing the course. तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ढेर सारे इंडस्ट्री पर्सन्स हैं जिनसे इन फ्यूचर आई विल डिस्कस आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस कि हम किस तरह से और इसको बढ़ा सकते हैं. एंड नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग टू रन द MTech साइबर सिक्योरिटी कोर्स फुल टाइम इन द डे टाइम. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कॉन्टेक्ट and you can attend, you can join this course. Okay, thank you. I think that's a welcoming gesture from your side, Mr. Pavanji. As a concluding step of this panel session, I would request the speakers like Mr. Raghavji and Shailesh and Pavanji, if they would like to kind of share a key message for the business leaders and our audience here through any kind of presentation of their own. Shall I? Okay, sure. Good, very good morning. Okay, now it's about 2 afternoon. Let me have my presentation, sir. In this case. Yeah. So once again, thank you for inviting me for the presentation, the speaker. I will not take much time. I am also a HOD of the Regional Center of Excellence Application Security. The gentleman asked about the question about that 100% sites are the private. No, not 100% sites of the private. A lot of sites in UP are government. And as you has also asked about the framework. If you go any district website, for example, lucknow.gov.in or kanpur.gov.in in UP, you will find a framework, that is SWAS framework. And SWAS framework is already secure. It is on secure platform. It is like of CMS, content management system. So whatever you host there on the site, it is already in secure environment. So government is doing a lot of things in such type of frameworks. I will cover such thing in my presentation, which will solve your query also. One thing asked by Mr. Kowal about the main thing which you are about the COVID. कोविड के बाद क्या हुआ कि डिजिटल एसेट्स के और डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी भी छूट रही है वो है एंड पॉइंट सिक्योरिटी, जिसकी आप बात कर रहे थे. तो हमें अभी मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ इसको, अभी बोल देता हूँ. तो हमें जो सबसे हम लोग सर्वर सिक्योर कर रहे हैं, फायरवॉल लगा रहे हैं, IPS लगा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो लैग कर रहे हैं क्योंकि अब जो काम हो रहा है वो सिर्फ ऑफिस में नहीं हो रहा है. अब जो काम हो रहा है सिर्फ कुछ पहले क्या होता था, एक बिल्डिंग में एक ऑफिस इन्वायरमेंट में काम होता था, एक लैन होता था, नेटवर्क होता था जो सिक्योर होता था. बट नाउ वी आर वर्किंग फ्रॉम होम. आफ्टर कोविड गवर्नमेंट तो नहीं कर रही है, बट प्राइवेट सेक्टर्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम होम. और होम का मतलब क्या है, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं. अब वो लैपटॉप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो इस पे काम करती हैं कि दे आर गिविंग द सिक्योर लैपटॉप्स, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन ए लैपटॉप और मोबाइल विच इज टोटली 100% अनसिक्योर. कितने लोग हैं जो इस मोबाइल में एंटीवायरस डालते हैं? बहुत ही कम, 2, 3, 4, 5, 6. आपको पता नहीं है कि हम जब इस मोबाइल में काम करते हैं, डेटा ट्रांजैक्ट करते हैं, तो वो डेटा कितनी जगह ट्रेवल करता है. आई थिंक एसपी साहब मुझसे एग्री करेंगे. तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो इससे हो रही है, क्योंकि हम सारा काम इस पे कर रहे हैं. बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी इस पे कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल शेयरिंग भी इस पे कर रहे हैं, हम अपनी सोशल मीडिया की जो फेसबुक और इंस्टा पे वो भी इससे कर रहे हैं. आई गॉट ए कॉल, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ. मुझे पुलिस अफसर का कॉल आता है विद DP बढ़िया सी लगी हुई है और कि मेरा बेटा इज इन बिट्स पिलानी एंड ही नोज दैट माय सन इज इन बिट्स पिलानी विद ऑल एब्यूजिव वर्ड्स. अरे वो बम्बई में घूम रहा है और ये कर दिया वो कर दिया और भी बंद कर देंगे.
So this kind of calls are coming because कहीं ना कहीं उसको पता है कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा बेटा है जो वहाँ पढ़ता है और आजकल मुंबई में इंटर्नशिप के लिए गया हुआ है. तो विद ऑल सच इन्फॉर्मेशन दे आर यूजिंग द कॉल. मैं तो थोड़ा चलिए चूंकि उसको उल्टा डांट दिया कि जो करना है कर ले, बट लोग इसमें आ जाते हैं. anyway, so I will not go into all of the agendas because a lot of things are already covered by the Dr. Subhi. So मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पे, due to time constraint also. And directly goes to the, this is all the threat escape. Major three things which I am trying to emphasize, that is ransomware, phishing attacks, and insider threats, which is cause of the problem. Ransomware, everybody knows, a lot of things are already taught out. क्या हो रहा है, आपके डाटा आपका हैक हो जाता है और उसके बाद उसको मांगने के पैसे दिए जाते हैं. फिशिंग अटैक्स के बारे में बात हो चुकी है. मैं खाली थर्ड थिंग की बात करूंगा, दैट इज इनसाइडर थ्रेट्स. अभी क्या हो रहा है, हमको बाहर के लोगों से तो हम बचा रहे हैं, बट हमारे जो अपने लोग काम कर रहे हैं इनसाइडर थ्रेट्स, उनसे बचने का उपाय क्या है. मैं उसी में एंड पॉइंट सिक्योरिटी को भी डालता हूँ, क्योंकि जो लोग सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ वीपीएन पे हैं, क्या उनका वीपीएन सिक्योर है, क्या उनकी मशीन सिक्योर है. क्योंकि अब जो डेटा हम लोग सर्टिन से या एनालाइज कर रहे हैं, हम ये पा रहे हैं कि अब जो मेजर रिस्क आ रहे हैं, मेजर थ्रेट आ रहे हैं, वो बाहर से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे अपने से आ रहे हैं, हमारे अंदर से आ रहे हैं. तो दिस इज़ द पॉइंट जो कि आप सब इंडस्ट्रीज़ को देखने की ज़रूरत है और इसमें अच्छे सोल्यूशंस की भी ज़रूरत है जो इजीली अडॉप्टेबल हो. दैट इज इनसाइडर थ्रेट. इसमें मैं बात करता हूँ रिमोट वर्क वल्नरेबिलिटी, मैलिशियस इनसाइडर एंड क्रेडेंशियल थेफ्ट की. ये आपका पासवर्ड, बहुत से लोग विंडो की अपनी मशीन पे एडमिन का पासवर्ड भी नहीं डालते हैं. दे आर वर्किंग डायरेक्टली ऑन, कौन बार बार पासवर्ड डालेगा. बायोस का पासवर्ड भी नहीं डालते हैं. क्या हो जाएगा उससे, अगर हम बायोस का पासवर्ड नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा. क्योंकि अवेयरनेस भी इतनी नहीं है कि अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज को लॉक नहीं रखा है तो आपकी मशीन इजीली वल्नरेबल है, ये बताना पड़ेगा. अब वो ज़माना चला गया कि हमने मशीन ऑन की काम कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मशीन आर कनेक्टेड. कोई भी मालवेयर आपकी मशीन में आया, and if you are working without admin password and on administrative rights, who can do anything on the machine. So that's all. That is a हमारा कंसर्न जो अब गवर्नमेंट का है, हम लोग इस पर भी बहुत काम करने की जरूरत है कि इनसाइडर थ्रेट्स क्या है. This is the ecosystem which I was talking about earlier, कि we need to collaborate all these things. जब तक हम सारी चीज़ों को यूनिफॉर्मली कवर नहीं करेंगे, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, चाहे वो होस्टिंग सिक्योरिटी हो, चाहे वो एंड पॉइंट सिक्योरिटी हो, एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो, एंड सर्वर सिक्योरिटी हो, जब तक आप इन पांचों छठों चीज़ों को एक साथ एक बुके ऑफ दिस नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी थ्रेट्स बढ़ती रहेंगी. और जैसा कि एसपी साहब ने कहा कि हमने 2.5 लाख फ़ोन को ब्लॉक किया. सर कल 2.5 करोड़ भी होंगे, ये 5 करोड़ भी होंगे. जैसा आपने कहा कि 2.5 लाख फ़ोन को आपने ब्लॉक किया, तो मैं कह रहा हूँ वो दिन दूर नहीं जब 2.5 करोड़ फ़ोन भी होंगे. तो इसी से रक्त बीज, एक कहानी होती है ना, रक्त बीज जहाँ जहाँ गिरता था 10 पैदा करता था. तो वी नीड ऑल, वो तभी संभव है जब हम इस इकोसिस्टम को बनाएं. एंड दिस नीड्स नॉट ओनली गवर्नमेंट बट एज ऑलरेडी टेड, दिस इज ए कोलैबोरेशन. अनटिल अनलेस इनोवेटिव सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट का, इंडस्ट्रीज का कोलैबोरेशन नहीं होगा, हम इस पूरे इकोसिस्टम को बिल्ड नहीं कर सकते. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ नीड टू बिल्ड सच टाइप ऑफ इकोसिस्टम जो हमको ये प्रिविलेज देगा. इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा टाइम के बारे में. दिस इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी. एज टोल्ड अर्लियर, आवर वेबसाइट्स, आवर एप्लीकेशन शुड बी प्रॉपरली ऑडिटेड. Certain already issued a number of guidelines. We are as a government enforcing all these things. But अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे विभाग, बहुत सारे डिपार्टमेंट बहुत ही लीनियंट है. अभी मैं एक डिपार्टमेंट की बात करूँगा जिन्होंने कहा कि अरे क्या होगा यार, उनका डेटा कंप्रोमाइज़ हुआ, आई हैव डिस्कस विद हिम. अरे बोले छोड़ो. तो वी आर दिस एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इट्स नॉट बाय डिज़ाइन, इट शुड बी बाय डिज़ाइन, नॉट बाय द कि हमने कर लिया और तो हमने ऑडिट करा लिया. क्योंकि चेंजेस आर ऑलवेज देयर. आज आपने कुछ काम किया, कल आप फिर चेंज करेंगे. तो इट शुड बी बाय डिज़ाइन. सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन मॉडल अडॉप्ट करना. जो भी आपकी इंडस्ट्री में डेवलपर हैं, दे शुड लर्न अबाउट द सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन कॉन्सेप्ट. सो योर ऑल एप्लीकेशन साइट शुड बी प्रॉपरली ऑडिटेड by the certain panel management. This is the whatever about DPDP Act. It is coming there with all the huge penalties are there if your data has been shared. So we are working on it, and I will go to the direct to the. This is the challenges.
This is the main thing which is required, we are facing the challenges in the large data environment. That is the one challenge I would try to highlight, that is data integration and sharing. A lot of integration is going on with industry. एम्स की जो आपने बात करी, एम्स में क्या हुआ? एम्स में जो डाटा की प्रॉब्लम आई वो कोई बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं था, सिर्फ पोर्ट का जो ओपनिंग थी वो किसी एक डोमेन के लिए खोली गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो डोमेन किसी ने कंप्रोमाइज कर दिया। तो आप जो ब्लॉक फायरवॉल खोलते हैं, आप जो पोर्ट खोलते हैं, आप जो शेयरिंग के लिए एपीआईज अलाउ करते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है कि हमने किसको किसको दिया है, क्या वो आज भी यूज़ में है। ऐसा तो नहीं आपने कोई डोमेन को कोई राइट दिया और वो डोमेन ही किसी ने खरीद लिया और उसके थ्रू आप अटैक कर दिया। तो जो एप्लीकेशन और शेयरिंग की बात है या एपीआई क्योंकि आजकल इंटीग्रेशन का बहुत ज़माना है, आप एक साइट बनाते हैं 20 जगह से इंटीग्रेट करते हैं, इट इज़ आवर ऑफ नीड, बट वी नीड वेरी केयरफुल अबाउट द डेटा एप्लीकेशन एंड शेयरिंग, हाउ वी कुड इंटीग्रेट, हाउ वी कुड व्हाट शुड वी शेयर, क्या हमें शेयर करना है, क्या हमें शेयर नहीं करना है, ये थॉट होना चाहिए। यूज़र एजुकेशन एंड अवेयरनेस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा ना, विंडो में पासवर्ड भी नहीं डालते हैं, उस पर सारा काम करते हैं, वीपीएन भी चलाते हैं। क्या हो गया भाई इसका हाँ आ गया। So these are the challenges, we should go over it, and this is the initiative which government has taken already. We are building a NCSP, cyber security policies there, and NCCC, you can always search on the Google. I foresee this all the initiative which government of India is already taking on and certain to above the we are going. And this is the basic points which I would highlight to take away from this conference. कि अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका काफ़ी कुछ सेफ हो जाएगा एज ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। जो आप अपना काम कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो आप साइट होस्ट कर रहे हैं, अगर आप ऑडिट करा लेंगे, अगर आप मशीनों को अपडेट रखेंगे, ऑब्सोल्यूट हार्डवेयर यूज़ नहीं करेंगे, ऑब्सोल्यूट ओएस यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर अपडेट करते रहेंगे, तो भी काफ़ी कुछ जगह से आप डेटा ब्रीच से बच सकते हैं। तो दिस इज़ द at the end of the all cyber security incident, I will written in the points, no external software, USB device, this is very important। हम कहीं भी कोई भी डिवाइस लगा लेते हैं डेटा कॉपी करने के लिए। So I think with this takeaway, I can close my session. Thank you. Thank you so much, Shailesh ji. I think we all have heard very, very unique perspectives, very, very new perspectives from all the leaders who joined here in the CII forum. And once again, thankful to all of you who have come from very, very far places. As we come to the conclusion of this panel session, I would like to kind of dedicate a small poem to CII and for all of you. I myself being a poet who keeps performing in various events, this is my gracious opportunity to dedicate a poem to you. You all are legend in your fields, you all are experts in your field. So my poem, whose title is The Legend, is for you, which goes like this. I have now returned you your glorified past, because my heart is roving for a new gleam. Now is the time to return to the nest, for no time to rest, but boil to the steam. Basking in the laurels will soon go past. Time ahead will be a series of what and how. You are the chosen to fruit a new seed. You are the chosen for rigor. It is never or now. Come what may, your standings will seek strength. Come what may, your standings will seek strength. Lay what way, the jolts will peak with wrath. The energy will wither to a new low. There only you have to come to sow. The boundaries will be stretched to no limit. The comfy zones will go invisible. Lest you yourself choose to go extinct, the outlook will look serene, the prospect impeccable. Those dark nights will witness you roar. Those dark nights will witness you roar. Those tired sights will hold off their pour. Be persistent and immaculately patient. There is only one direction
From here, soar. Rise of a hero is unwrapping from the ashes. Let the mow be in its slowest form. Let the awakening give a standing ovation. Let this birth take everybody by storm. This period will go down in history as nothing but a hallmark of your virility. The humanity will adore you and prehend to anoint you as the next Sever, next legend. Thank you. It's a pleasure to have you here. Thank you so much. I request all the speakers for a group photograph. Before that, I would request Mr. Raghav Krishna to kindly present a token of appreciation to all our esteemed speakers. May I now request Mr. Vishal Vikram Singh ji to kindly present the memento to Mr. Raghav Krishna. Thank you. May I request the speakers for a group photograph, please, now? Thank you. We'll begin with our next session, which is on strengthening cybersecurity to propel MSME and startup growth safely and securely. Would request Dr. Subhi Chaturvedi and Major Vineet Kumar, founder and global CEO, Cyber Peace Foundation, to please join the dais.
May I please request Dr. Subhi Chaturvedi to take the session forward? Hi, is this better? Yeah. Thank you. And hello once again. I know we've been seeing a lot of each other today. I'm very, very delighted and happy to introduce the key resource person and speaker for the session. Why are we doing this? I'll just set the context very quickly and then share a little more about Major Vineet Kumar. Vineet is one of the foremost pioneers in cybersecurity. He started and laid the foundation of ethical hacking in the country. He has a very, very vast experience of having worked with the government in various capacities. He's done his education at Cranfield University. He's been an IVLP fellow. He's currently the founder and president of a global organization called Cyber Peace. Cyber Peace itself is a very, very important domain. It's seen a lot of interest recently, and India takes a leadership position when it comes to brokering peace, managing conflict, where Vineet's efforts are not just at the grassroots levels, but he works with the highest echelons of governments, powers, working in capacity building, ensuring that they're at the cutting edge of research. He's also a cybersecurity entrepreneur himself. You'll hear a lot more about him, but I value him as a fantastic partner and somebody who's done a lot of work on the ground. So we decided to partner with CII to bring you this session as InMobi and Glance, not just as an initiative of our company, but this workshop is very practical, it's hands-on, and it is located in the context of the US-India CEO Forum's Working Group 7, where we've launched the initiative called Nihit and Prakshepan. With Nihit, what we're doing is we've built a website, so you can find it online. It's called the nihit.org. And this is where, under a single umbrella, we are bringing all knowledge possible to make sure that your MSME, your startup can go global. How do we do a handshake between companies coming out from the US and India? And one of the critical threats that we understood, we were able to identify, was cyber resilience, cyber hygiene. So if you want to integrate in a global company, the biggest risk really was how rigorous is your cyber hygiene, how prepared are you? Because then you would become a vulnerability for a larger organization. So our attempt is to take this across India, across the US, to meet and touch as many startups and as many companies as possible, and to share good practices. I'm not even saying best practices, because that's too much of a blanket one-size-fits-all approach. So whatever works in your context across sectors, and with Vineet's expertise and his entire team of champions and cyber warriors, we are really looking forward to making sure we are able to give back to the community. In our initiative, we are supported by MasterCard from the US side and Tata Sons from the India side, who are the leaders for this particular initiative. Our attempt is to make sure that growth percolates and we build a very resilient and cyber practical, transparent, ethical, innovation friendly ecosystem. Thank you so much once again, and over to you, Vineet. Thank you. Right. Thank you. Thank you, Subhi, for the very, very long introduction about me and the kind of activity that CyberPeace does. Well, again, it's really an honor to come after you, though it becomes difficult for the speakers also to cover, because you cover almost everything and everything has already been said by you and the previous speakers in the panel. But I will limit my talk mostly on the MSMEs and the kind of cyber attacks and the issues that are there. You already heard about the great initiative that was launched just last month. And since then, there's a lot of MSMEs and startups are kind of approaching us, and we have been trying to do these workshops at different regions and locations. The whole idea, though it's a small talk, ideally in a workshop like this, we'd like to have covered something on the practical side, and we would have told you about certain things that you need to do when it comes to your Wi-Fi routers, when it comes to your mobile devices, and even your application that is there today. So I'm going to cover briefly on it. I'll try to do one or two practicals probably, because all of you use WhatsApp, so what kind of settings you need to make,
and what kind of stuff that you need to do. We have a lot of collaterals, publications, something like this that we published. Again, if you see here, I just have one copy. It's a financial fraud toolkit that we have developed, which is focusing on different kind of MOs and frauds. Have you heard about the famous Netflix movie Jamtara, or the documentary? Have you heard about it? Thank you, Subi. I know you have a meeting. We'll catch up at the airport. So Jamtara, if you have seen, there are a lot of cases that shows how financial frauds are happening, mostly targeting the individuals, but now it's also, I mean, at a very larger level, it is targeting the organizations as well. And the implications are such. We heard the case studies from the previous speaker. I'll just mention one, but it's a very serious one, because as an organization, we contribute on the ground. हम लोग grassroots पे काम करते हैं. हम लोग गांव, local villages, आंगनवाड़ी workers, हम लोग एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक policy makers के साथ काम करते हैं. तो इसमें हम लोगों को क्या एक टिप ऑफ मिला था, और उसको फिर हमने MEA को लिखा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को भी लिखा था. जो नॉर्मल जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो आपको कॉल्स आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो एक बहुत ही आई वुड से मास्टरमाइंड आपको कॉल कर रहा है. वो हो सकता है कि एक साधारण सा एक कोई हो सकता है एक मे बी इन द 18 to 20 ईयर्स या 23 ईयर्स के एज ग्रुप में एक यूथ हो जो कहीं स्टक हो सकता है वो इंडिया में भी नहीं है, उसे कोई जॉब फ्रॉड में फंसा करके से कंबोडिया भेज दिया या किसी कंट्री में भेज दिया, वहाँ पे प्रॉपर कॉल सेंटर बना हुआ है. और कॉल सेंटर ऐसा आप कह लें कि वो 4 दीवारी इतनी बड़ी कि जेल की जैसी 4 दीवारी है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं वहाँ पे, तो ताकि कोई वापस वहाँ से निकल के भाग भी नहीं सकता है. So people get into trap में फंस गए. Now they are kind of forced to do these kind of scams. They are forced to scam you. उनको टारगेट दिया जाता है कि डेली आपको 10 कॉल्स करने हैं. अगर आपने 10 कॉल्स में आपने 2-3 लोग को नहीं फंसाया, देन आपको पनिशमेंट दिया जाएगा एंड दे गेट बीटन अप हार्ड. तो ऐसे से बहुत लोग स्टक हैं. अभी कंबोडिया का भी बहुत बड़ा इशू है. इस तरह के बेल्ट्स अलग अलग लोकेशंस में अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज बने हुए हैं, नॉट जस्ट इंडिया. जामतारा तो अब तो मैं बोलता हूँ कि जामतारा इज लाइक द बदनाम टेरिटरी. हर जगह इस तरह के जामतारा अलग अलग पार्ट, हरियाणा में आपने सुना ही है, नू का सुना ही नाम, असम में है, साउथ में है, हर बिहार में है. अलग अलग लोकेशंस पे इस तरह के साइबर क्राइम हॉटबेड्स बन गए हैं, क्योंकि इट्स लाइक अ ह्यूज रेवेन्यू इफ यू सी ओवरऑल. सो आई जस्ट कट इट शॉर्ट. स्कैम्स आर मेनी, फ्रॉड्स आर मेनी. अब यहाँ पे ऑलरेडी आपने सुना क्या क्या हो सकता है. आई विल गिव यू सम टिप्स कि आप किस तरह से आप इस तरह से बचें. और आपको अगर आपका MSME है, अगर आप स्टार्टअप हैं, तो ज़रूरी नहीं कि साइबर सिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिक्वायर्ड है. देयर आर लॉट ऑफ ओपन सोर्स टूल्स, बहुत सारी ओपन सोर्स टूल्स है, फ्री टूल्स है, जिसका आप यूज़ करके अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी संस्था को भी सुरक्षित रखते हैं और अपने सोसाइटी को भी सुरक्षित रखते हैं. तो मेरा आज का बेसिकली टॉक इसी से होगा. कुछ फैक्ट्स, नंबर्स, ये सब ऑलरेडी प्रीवियस स्पीकर्स ने ऑलरेडी कवर किए, बट कुछ मैं सोचा थोड़ा सा कंपाइल कर लूँ कि MSME और स्टार्टअप्स को लेकर के किस तरह के इश्यूज हैं. और हमारा एक रिसर्च था कोविड टाइम में. अगर आप गूगल करेंगे साइबर पीस MSME, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको हमारा पूरा वो रिसर्च का आपको आ जाएगा कि किस तरह का हमने रिसर्च में देखा कि कौन कौन से अटैक्स हो रहे हैं, जिसमें तब भी रैंसमवेयर था. साइबर पीस हमारी संस्था एक मेंबर है ग्लोबल रैंसमवेयर टास्क फोर्स का और ग्लोबल स्टॉकवेयर अलायंस का. तो हमें लेटेस्ट रैंसमवेयर, लेटेस्ट थ्रेट्स के बारे में इमीडिएटली पता चल जाता है, जैसे भी होता है. उसमें बहुत सारी एंटीवायरस कंपनीज भी इस कोलिशन में है. और हमारा एक तरह से अप्रोच ये रहता है कि हम एज ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, साइबर पीस TV हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप उसमें जाएंगे तो जैसे अभी इन शॉर्ट में कवर करूँगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको प्रिवेसी सेटिंग्स करना है तो कैसे करना है, मोबाइल फ़ोन में अगर वायरस आ गया तो कैसे रिमूव करना है. तो इस तरह के कंटेंट हम उसमें डाल रहे हैं, जो कि जियो पे भी अब हमें एक चैनल मिल गया, तो जियो पे भी हम कॉन्स्टेंटली इस तरह के कंटेंट स्ट्रीम करेंगे. तो ये सब रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं, हम आपको भेजते हैं. एक और इनिशिएटिव हमने जो लिया है, जैसे कि प्रीवियस पैनल ने बताया कि स्किल शॉर्टेज है, स्किल लोग नहीं मिल रहे हैं. भारत में ही इनफैक्ट NASSCOM का एक रिसर्च है, NASSCOM का इनफैक्ट रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि करीब करीब 35 लाख साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का रिक्वायरमेंट है इन द कंट्री. और ये नंबर और बढ़ेगा क्योंकि अब DPDP एक्ट आ गया. DPDP एक्ट के अंदर DPOs का रूल आ गया है. तो अगर आपकी एंटिटी, अगर डजेंट मैटर कि छोटी है या बड़ी है, अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी प्रकार का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो सेंसिटिव डेटा है, जैसे
इसमें कुछ MSMEs है जो एंड यूजर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इवन NGOs कलेक्ट करते हैं, बेनिफिशियरीज का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्रिटिकल डेटा है जिससे एक पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, जिससे किसी को टारगेट किया जा सकता है, हैक होने पे उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। देन यू नीड टू कंप्लाई टू द DPDP एक्ट ऑल्सो। तो ये सब मैं थोड़ा बहुत आपको कवर करूंगा, बट दीज आर सम क्विक स्टैटिस्टिक्स। नुकसान बहुत हो रहा है ग्लोबली, साइबर क्राइम का पूरा इंडस्ट्री इतना बड़ा हो गया है कि इससे फाइनेंशियल फ्रॉड और बहुत बहुत इश्यूज क्रिएट कर जा रहे हैं, और इसमें AI एक बड़ा इनेबलर आ गया है। अब AI का पॉजिटिव साइड हो गया, टेक्नोलॉजी पॉजिटिव्स बहुत है टेक्नोलॉजी में। इनफैक्ट मैं कहूँगा 70% टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव्स हैं, लेकिन 30% जो नेगेटिव्स हैं वो ओवर शैडो कर देते हैं टेक्नोलॉजी की अच्छाइयाँ जो हैं। आज हम टेक्नोलॉजी था जिसके कारण हम आपस में बैठे कोविड टाइम्स में एक दूसरे के साथ संपर्क में थे, और हमने इनफैक्ट कोविड सर्वाइव किया। वो टेक्नोलॉजी हैड बीन दैट काइंड ऑफ थिंग, बट देन मिसयूज, क्योंकि अच्छाई के साथ बुराई तो आनी है, तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो रहा है। ग्लोबली ये भी देखा गया है कि 48% का जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके साथ साइबर इंसिडेंट्स हुए हैं। अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, लेकिन एक मिसकंसेप्शन अगर आप लेके अगर बैठे हैं तो किसी ना किसी दिन आपके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है। जैसे कि हम लोग बहुत छोटे, वी आर टू स्मॉल टू बी टारगेटेड, लोग का कहना है। कौन मेरे फोन में कौन हैक करके क्या लेगा, कोई फायदा नहीं है, मेरे फोन में तो बस नॉर्मल चीजें हो। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट इट इज कि आपको यू नीड टू मेक श्योर। प्रीवियस स्पीकर मेंशन्ड अबाउट साइबर हाइजीन, कि आपको बेसिक साइबर हाइजीन की एकदम आवश्यकता है। अगर आपके पास, मैं कहूँगा कि, और बाय द वे साइबर सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि आपको हम लोग 100% गारंटी करते हैं कि आप बचेंगे। अटैक्स होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अटैक्स, 99% अटैक्स से आप बचेंगे, लेकिन 1% वो इतने एडवांस सोफिस्टिकेटेड अटैक्स होते हैं जिससे बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आज, जब उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप मेजॉरिटी ऑफ इश्यूज से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। चैलेंजेस जो खास करके MSME एंड स्टार्टअप्स में देखा गया है कि लिमिटेड अवेयरनेस है, लोग अवेयरनेस ही नहीं है, लोग के जागरूकता ही नहीं है, रिसोर्स कॉन्स्टेंट है। लोग हमारे पास आते हैं, कभी कभार रैंसमवेयर एनक्रिप्ट हो गया, सर्वर लेके आते हैं, बोलते हैं इसी में मेरा पूरा डेटा पड़ा हुआ था, अब इसको आप किसी तरह रिकवर कीजिए। समटाइम्स हमारे लिए चैलेंज ये रहता है कि उसका एनक्रिप्शन स्ट्रेंथ इतना ये रहता है कि मतलब लेटेस्ट एनक्रिप्शन रहता है कि उसको ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं, उसका कोई की भी नहीं है, तो लिटरली वो हमारे लिए भी ब्लैक बॉक्स बन जाता है। तो थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा कि आपको एक तो इन्वेस्टमेंट, मैं जैसा वापस दोहराऊंगा कि इन्वेस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको टाइम की ज़रूरत है और कुछ रिसोर्स इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग ओपन सोर्स टूल, जो कोई ओपन सोर्स टूल लेकर के आपके एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करते हैं। तो इसके बारे में क्योंकि जानकारी नहीं है तो लोग करते नहीं हैं। तीसरा है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अब आप अपने घर में जाएं, अब ऑफिस से निकल के घर में जाते हैं, आप अगर मैप करें अपने घर में कि कितना कनेक्टेड डिवाइसेस, तो ऑन एन एवरेज पहले 2-3 साल पहले तक देखा गया था 4-5 डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहते थे। फास्ट फॉरवर्ड नाउ, आज के दिन में करीब 15 से 20 डिवाइस है आपके घर में जो इंटरनेट से कनेक्टेड है और इंटरनेट से बात कर रही हैं, और वो सब आउटडेटेड है। आपने स्मार्ट डोरबेल लगा लिया, आपने स्मार्ट CCTV लगा लिया, वॉशिंग मशीन स्मार्ट ले लिया, स्मार्ट TV ले लिया, हर चीज़ स्मार्ट, एलेक्सा से लेकर गूगल होम, हर चीज़ स्मार्ट कर लिया। बट क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें टाइम की टू अपडेट दीज डिवाइसेस? नहीं कर रहे हैं, तो दीज कैन बी दी हंटिंग ग्राउंड फॉर दी साइबर क्रिमिनल, कि वो इन डिवाइसेस को हैक करके घर के डिवाइस को हैक करेंगे और अटैक माउंट कर देंगे किसी से गवर्नमेंट वेबसाइट पर, कल को पुलिस आपके पास आएगी कि आप क्यों अटैक कर रहे हैं। So that is why anything that you buy, any device that you buy, any technology that you buy, any gadget that you buy, make sure कि आप in and out जाने उसके बारे में, और इतना तो जरूर जाने कि उसको अपडेट कैसे करते हैं, उसमें बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग्स कैसे इनेबल करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड भी खुला छोड़ देते हैं, कन्वीनियंस प्रेफर करते हैं कि वाईफाई में पासवर्ड की कोई जरूरत ही नहीं है, घर में वाईफाई यूजर है, घर वाले यूज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि बाहर चलता हुआ, रोड पे चलता हुआ कोई आदमी भी कनेक्ट करके या उससे मिसयूज करके आपके साथ कुछ फ्रॉड कर सकता है। अगेन केसेस हमारे पास आए हैं, स्पेशली एबल्ड का केस आया हमारे पास कि, और पुलिस उन्हें परेशान करी कि आपका वाईफाई नेटवर्क यूज हुआ है, आपका फोन यूज हुआ है इस क्राइम को कमिट कर, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अभी भी वो केस चल रहा है दिल्ली का, दिल्ली पुलिस के अंदर ये केस है अभी फिलहाल चल रहा है। बट यही सब चैलेंज है क्योंकि हम जानते नहीं हैं और उसको हम करना नहीं चाहते और कन्वीनियंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्किल्ड पर्सनल ऑलरेडी कवर किया कि स्किल्ड पर्सनल का हमारा
अभी लैक कर रहे हैं, और अच्छे कोर्सेज जैसे अभी सुना MSc इन साइबर सिक्योरिटी है, M.Tech प्रोग्राम्स, B.Tech प्रोग्राम्स अब आ रहे हैं, तो इससे वो आई थिंक सो स्किल गैप को फिल करने का काम कर रहा है। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सप्लाई चेन में अगर मैं बात करूं, खास करके अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, CII जो क्रिटिकल सेक्टर है, जैसे किसी ने अभी हेल्थ का बात किया, एविएशन का बात किया, दे आर ऑन हाई रिस्क पे उसको दिखाया जाता है, और उसको उस सप्लाई चेन करप्शन करना, अंदर मैलवेयर इंजेक्ट करना और डेटा ब्रीच करना, डेटा कॉम्प्रोमाइज करना, ये सब आम बातें हम हो गई हैं। AI एंड मशीन लर्निंग अगेन बीइंग यूज्ड बाय लॉट ऑफ क्रिमिनल्स, और अपने सुना आपने अभी डीप फेक का अच्छा एग्जाम्पल कि किस तरह से डीप फेक यूज हो रहा है, लोगों के पैसे निकाल रहे हैं। कोई बोलेगा आपको फोन करके कि ये आपके बोलेगा कि आपका बेटा मेरे पास है, और पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, और आपका बेटे से बातचीत करा देगा, वो आपका बेटा नहीं होगा बट वो AI होगा जो आपसे बात करेगा, और आप डर के मारे आप पैसे ट्रांसफर करेंगे। सो दीज काइंड ऑफ इश्यूज आर हैपनिंग। फिशिंग बहुत इनेबलर है। फिशिंग इस तरह के जो लिंक आता है, लुक अलाइक लिंक्स, या कुछ ऐसे लिंक्स आते हैं, जैसे कोविड टाइम में और अभी भी आ रहा है व्हाट्सएप की वर्क फ्रॉम होम वाला एक मैसेज आता है कि आप घर बैठे 2000 से लेकर 10,000 तक कमाएं घर बैठे, और ये जानने के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, इसके बारे में आगे की जानकारी जानने के लिए। सॉरी, जैसे आपने उस ग्रुप को ज्वाइन किया कि आप समझे कि आपका डेटा गया, सिर्फ मतलब आप लिंक पे क्लिक करने से ही आपके फ़ोन में वायरस या मैलवेयर आ सकता है, और क्रिमिनल आपके फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। प्रीवियस स्पीकर ने ऑलरेडी इनसाइडर थ्रेट्स, मैलवेयर और रैंसमवेयर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में कवर किया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इस तरह के मैसेजेस आपको आते होंगे। हम बहुत सारे इस तरह के मैसेज जो भी आते हैं हम उसको स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, और साइबर पीस खुद थ्रेट इंटेल रिपोर्ट हम रिलीज करते हैं कम्युनिटी में। ये किस तरह का कैंपेन है कि चाइना से रन कर रहा है या कोई XYZ कंट्री से कर रहा है। इस लिंक पे अगर आपने क्लिक किया तो आपको क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, आपका क्या क्या डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया है, या इस तरह के हम रिसर्च करते हैं और लोग को बताते हैं, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल इंटेंशन नहीं है अब इन सब क्राइम का, अब इसका मच मोर है। मतलब कि आपके डिवाइस को एक तरह से हाईजैक करें, और फिर उसके बाद आपके फ़ोन में कुछ भी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपकी कंपनी का डेटा हो, या कुछ आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स हो, कंटेंट हो, कुछ भी उनको चाहिए कहानी, कुछ इनफैक्ट कंटेंट, और उसके बाद वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट करेंगे। ये रैंसमवेयर का है, जैसे आपको टाइम बॉम्ब की जैसा टाइमर चल रहा है, वहाँ पे टाइमर बता रहा है कि आपके पास सिर्फ करीब 6 दिन है, 6 दिन के अंदर अगर आपने नहीं एक्शन लिया तो फिर आपका सारा डेटा डिलीट। फिर आप बोले ठीक है डिलीट करने दो, तब उसको लगता है कि अब ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा ट्रिक है कि डेटा देखो इनके कंप्यूटर में क्या है, डेटा कहीं ऐसा तो नहीं सेंसिटिव डेटा है। फिर कभी कभी आपके एड्रेस बुक, आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स वाले जो बुक या डेटा उसका इंफॉर्मेशन है, उससे डेटा निकाल, बोलते हैं कि आपका सारा इंफॉर्मेशन, आपका मैसेज का एक्सेस, आपके एड्रेस बुक का एक्सेस मेरे पास है, मैं तुम्हारे बॉस को मैसेज कर दूंगा कि आपने ये डेटा इधर इसको भेजा, ये किया। अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं। डीफेक का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट छोटे इंडिविजुअल से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात करें, या कुछ कंपनीज को डिफेम करने के लिए भी आजकल बात करें, तो ये डीफेक का बहुत यूज़ हो रहा है कि आपके ब्रांड को, आपका ब्रांड रेपुटेशन को नुकसान डीफेक करेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? सबसे पहला, सब जितना भी सॉफ्टवेयर है, चाहे आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई भी डिजिटल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, उसको आप तुरंत जा करके आज अपडेट ज़रूर करें। आप जाके आप सर्च में अगर अपडेट डालेंगे, अपडेट डालने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो अपडेटर आ जाएगा सामने, और उससे आप रन कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं, या तो आप ऑटो अपडेट इनेबल करके रखें, या फिर आज जाएं और सारे ऐप्स को कम से कम हर 2-3 दिन पे एक चेक करते रहें रैंडमली कि कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जो कि अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत बार सिर्फ फीचर नहीं, फीचर के साथ साथ बग्स को पैच करते हैं ऐसे अपडेट, और अगर आपने नहीं उसको पैच किया तो आपका सोचिए कि आप एक दरवाज़ा खुला हुआ है आपके फ़ोन में या आपके नेटवर्क में घुसने के लिए। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, ये जनरली आप जैसे MSMEs की बात करें, अगेन स्टार्टअप्स की बात करें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें, तो आपके पास अगर बहुत सारे मशीन्स हैं, करीब 40-50 कंप्यूटर हैं, तो आप एंड पॉइंट सिक्योरिटी, अगेन इसके भी बहुत सारे ओपन सोर्स सॉल्यूशन आ गए हैं, जो आपको मैं अगर बाद में वर्कशॉप की बात, या फिर जो हमारा प्लेटफॉर्म है निहित के थ्रू अगर आप कनेक्ट करेंगे तो हम ये सब एडवाइस कर देंगे आपको कि कौन सा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, किस तरह के ओपन सोर्स एप्लीकेशन को यूज़ करके सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह के फ्री प्रोग्राम्स,
जैसे क्विक हील का फ्री स्कैनर है, आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर लें, उससे स्कैन करें नेटवर्क को। तो एंटी मैलवेयर होना जरूरी है, एंटी वायरस होना जरूरी है, फायरवॉल होना सिक्योरिटी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अगर वाईफाई आप घर में रखे हैं, वाईफाई राउटर है, और एयरटेल वाला अगर आपका आके इंस्टॉल कर रहा है, ब्रॉडबैंड लगा रहा है, कनेक्शन कर रहा है, तो उसको जरूर बोले कि वाईफाई का पहले तो उसका पासवर्ड चेंज करे, उसका जो यूजर नेम पासवर्ड है राउटर एक्सेस करने का, और जनरली डिफॉल्ट एडमिन रहता है, उसको चेंज करके पासवर्ड आप अपना खुद का डालें, ना कि उस बंदे को बोले डालने के लिए। नंबर 2 स्टेप वुड बी सिक्योर योर वाईफाई। पहले जो आपका वाईफाई पासवर्ड होगा वो लंबा होगा, और साथ ही साथ ये उसका जो स्ट्रेंथ है WPA3 याद रखें, WPA3 होना चाहिए। WPA2 क्रैक हो जाता है, WPA बहुत इजीली क्रैक हो जाता है, बट WPA3 रखें तो ये आप सिक्योर रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये अनब्रेकेबल है, बट आप लिटरली मतलब सिक्योर रहेंगे फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ये एक स्क्रीनशॉट है सेटिंग का कि कहाँ जनरली मिलता है वायरलेस सेटिंग। वो आप जब अपने राउटर में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे वायरलेस सेटिंग में आएगा, और यहाँ पे आपको चूज करने देगा सिक्योरिटी का। देखिए पासवर्ड थोड़ा लंबा रखें, कोशिश करें 14-15 कैरेक्टर का फ्रेज के फॉर्म में पासवर्ड डालें, और एन्क्रिप्शन स्ट्रेंथ जो उसका एकदम हाई रखें, WPA3 से नीचे बिल्कुल नहीं रखें। सॉरी। कोई भी रिमोट एक्सेस अगर आप घर से, जैसे कोविड के दौरान हम लोग घर से अपने ऑफिस के काम कर रहे थे, वी रिमोटली एक्सेसिंग एवरीथिंग। सो उस समय क्या देखा गया कि घर का नेटवर्क, अगर आपका फ़ोन या कोई भी आपका जिस कंप्यूटर से आप एक्सेस कर रहे हैं, अगर वो हैक हुआ है तो उससे कॉर्पोरेट नेटवर्क का लोग को एक्सेस मिल जा रहा था। लोग क्रिमिनल ऐसे ही खेल रहे थे, उनको भी मालूम है कि सब घर में बैठे हुए हैं, तो कोशिश करो एम्प्लॉयज़ को हैक करो और उसके थ्रू नेटवर्क में घुस जाओ। तो जब भी आप, और या फिर दूसरा चीज़ है कि अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं रेगुलरली ट्रैवल करता हूँ, तो अब जैसे एयरपोर्ट पे आ गया, अब एयरपोर्ट में मेरा खुद का नेटवर्क नहीं है, तो मैं एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं फ्री वाईफाई कनेक्ट करता हूँ तो मैं VPN हमेशा ऑन करके रखता हूँ। या होटल की बात करें, होटल में अगर मैं अपना होटल के फ्री वाईफाई को कनेक्ट करता हूँ तो हमेशा पहले ये करता हूँ कि VPN मैं चालू करूँ तभी कनेक्ट करूँ, क्योंकि उस नेटवर्क पे कोई भी देख सकता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे अगर कनेक्ट होते हैं तो एयरपोर्ट पे कोई भी आपका ट्रैफिक स्कैन करके बता सकता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने VPN किया हुआ तो आप कर रहे हैं कि बीच में एक टनल बन गया है और वो एन्क्रिप्टेड टनल है। तो मैं एक VPN जो यूज़ करता हूँ मैं वही रिकमेंड करूँगा आपको, फ्री है और टेस्टेड VPN है, इसका नाम है प्रोटॉन, PROTON। प्रोटॉन VPN है, इसका ईमेल सर्विस भी है जो फुल्ली एन्क्रिप्टेड है, बट VPN बहुत अच्छा है इसका, और भी ऐसे बहुत सारे, बट प्रोटॉन हमारा टेस्टेड है। तो आप लिख लें प्रोटॉन VPN, डाउनलोड करें, फ़ोन में डाउनलोड करें, आप अपने iPad में डाउनलोड करें या कंप्यूटर में डाउनलोड करें। आप डाउनलोड करके बस कनेक्ट करना है, अकाउंट एक क्रिएट करना होगा, अकाउंट क्रिएट करके कनेक्ट करना है और आपका कनेक्शन सिक्योर हो जाएगा। बैकअप बहुत ज़रूरी है, बैकअप कोशिश करें। और आजकल ये भी एक और एडवाइजरी मैं दूं कि आजकल क्रिमिनल बैकअप को टारगेट कर रहे हैं, तो बैकअप का भी बैकअप रखें कि कल को आपका एंटरप्राइज का अगर किसी ने हैक कर लिया तो क्रिमिनल सबसे पहले उसको भी मालूम है कि आपका अगर रैंसमवेयर लग गया है तो आप जरूर बैकअप की तरफ जाइएगा और बैकअप से आप रिस्टोर कीजिएगा। एम्स के केस में इतना टाइम क्यों लगा सिस्टम्स को नॉर्मल होने में? क्योंकि बैकअप को भी टारगेट किया गया था। तो और इस तरह के बहुत तरीके हैं जिससे बैकअप को, क्लाउड बैकअप्स को भी टारगेट किया जाता है। तो आप पहले बैकअप जरूर रखें, एन्क्रिप्टेड फॉर्म में भी बैकअप रख सकते हैं और रेगुलर बैकअप रखें, ताकि कभी भी डिजास्टर कभी भी हो सकता है, कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। तो यू शुड बी रेडी फ्रॉम ऑल दीज डिजास्टर्स। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैंने ऑलरेडी बता दिया, बड़ा पासवर्ड, उसमें कोशिश करें अपर केस, लोअर केस, कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, नंबर डाल दिया। तो ये जितना भी आप पासवर्ड बनाते हैं वो एक तरह से डिफिकल्ट टू क्रैक, डिफिकल्ट टू हैक पासवर्ड बन जाता है। और मैं क्या एक टेक्निक यूज करता हूँ इज फ्रेज के फॉर्म में। कोई गाना मुझे अगर याद है तो उस गाना की 1-2 पंक्तियां, उसको, उस लाइन को ये करके, और उसी में मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए, स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दिए, तो उससे मुझे पासवर्ड याद भी रहेगा और पासवर्ड सिक्योर भी हो जाएगा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे गूगल में अगर बात करें या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ऑथेंटिकेटर करके एक ऐप आता है फोन में। आप गूगल ऑथेंटिकेटर आप जाएंगे, अगर एंड्रॉयड फोन यूज करें तो एंड्रॉयड फोन वहां पे आप ऐप स्टोर में स्कैन करेंगे तो आपको ऑथेंटिकेटर दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑथेंटिकेटर है, तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट टोकन।
या तो आप OTP, जैसे आपको बैंक में आप लॉगिन करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो एक OTP आपको जाता है, OTP आप डालते हैं तब फिर आपका अकाउंट खुलता है। वैसे ही आजकल टोकन का जमाना हो गया कि OTP को भी कुछ तरीके से हैक किया जा सकता है। तो लोग अब सॉफ्ट टोकन्स और हार्ड टोकन्स की बात कर रहे हैं कि सॉफ्ट टोकन्स को कैसे यूज करें, और वो रैंडम एक आपको नंबर जनरेट करके देगा, उस नंबर को आपको एंटर करने का, तभी आपको अकाउंट में एक्सेस मिलेगा। तो दिस इज अबाउट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब कुछ कंपनी जैसे गूगल अब अपना खुद का एक टोकन लॉन्च करे, हार्डवेयर टोकन उनका लॉन्च हो गया है, टाइटन करके उसका नाम है। इंडिया में तो पता नहीं, शायद अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मैंने टाइटन लिया था। और अदरवाइज एक दूसरा आपको टोकन बढ़ रहा है, यूबी की नाम है, यूबिको कंपनी का है, यूबी की है टोकन। हार्डली आपको अगर कुछ अगर आप मैं बात करूं करीब 1,500 या 2,000 के आसपास का उसका कॉस्ट आएगा। और वो टोकन बहुत इफेक्टिव है। मैं बता रहा हूँ आपको, अपने ईमेल में, अपने निजी ईमेल अकाउंट जैसे आप जीमेल में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप उसको इनेबल कर सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया में भी उसको इनेबल कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर अपने एंटरप्राइज नेटवर्क्स के लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग हार्ड टोकन जरूर यूज करें और पासवर्ड पे ही डिपेंडेंट नहीं रहे। सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज समथिंग दैट इज very much required for everyone. Sorry? Hardware tokens, yes. Yes, no, it's the company that I was mentioning was Yubico. But it has, I mean, different version. You have NFC based keys and, yeah, that's correct, yeah. So, और भी आपका ये है 2-step वेरिफिकेशन होना चाहिए। एप्लीकेशन में प्रिवेसी चेकअप्स आपको करने की बहुत ज़रूरत है। और अभी अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सएप ने एक फीचर इनेबल किया। अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में और प्रिवेसी में जाएंगे तो आपको एक छोटा सा ऊपर आइकन नजर आएगा, प्रिवेसी चेकअप। ये आपके लिए बहुत आसान, और एंड यूजर्स को मैं बोलता हूँ बहुत ही आसान है। आप वहाँ पे जाइए और उसको चेकअप कीजिए, और उसमें प्लीज डू द सेटिंग्स कि आपको ग्रुप में कौन ऐड कर सकता है, आपके मैसेजेस कौन देख सकता है, आपका प्रोफाइल फोटो कौन देख सकता है। हर एक चीज को आप बहुत इजी वे में आप जाके मैनेज कर सकते हैं। जस्ट यूज दैट फीचर कॉल्ड एज प्रिवेसी चेकअप। अकॉर्डिंगली आपके अगर बात करें टेलीग्राम की और अलग अलग मीडियम्स की बात करें, हर जगह प्रिवेसी चेकअप्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं यहाँ पे। तो इसको आप अपने प्लेटफॉर्म्स में आज ही जा करके आप ये सब चीज़ अपडेट करें। लेगेसी आईटी सिस्टम्स है तो उसको अपग्रेड करें। पुराने सिस्टम्स में अगर कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसका सपोर्ट बंद हो गया, जैसे आप विंडोज़ XP यूज़ कर रहे हैं, अब उसका ज़माना ख़त्म हो गया, अब सपोर्ट भी नहीं आ रहा, उसका कुछ नहीं आ रहा है, तो वो आपका ओपन डोर बन जाता है, खुला रास्ता बन जाता है इस तरह के साइबर अटैक्स के लिए। सॉरी, मैं 3-4 मिनट और लूँगा, आई नो आई एम गोइंग ओवर टाइम। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटरप्राइजेस के लिए, कि एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम जो हमने किया है, हम एट साइबर पीस हमने एक अपना एक छोटा सा टीम बनाया है जिसका नाम इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम है, कि कभी भी वो इंसिडेंट होता है तो वो टीम रिएक्ट करती है इन इंसिडेंट्स पे। और जब नहीं भी होता है ना, तो हम कुछ मॉक ड्रिल कर लेते हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लिया कि आज वायरस आ गया मेरे नेटवर्क में, फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से लोग रिएक्ट करेंगे। कभी कभी हम फिशिंग लिंक्स अपने टीम मेंबर्स को भेजते हैं चेक करने की उनका क्या प्रिपेयर्डनेस है। जैसे हमारे पास कुछ हेल्पलाइन ऑपरेटर्स हैं, वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनका बस काम है फ़ोन सुनना, जो भी सर्वाइवर आते हैं उनको मदद करना कि आपका किसी का इंस्टाग्राम हैक हो गया, ये हो गया, तो एक तरह से वो इन्फॉर्मेशन केसेस लेते हैं। देन हमारी टेक टीम आती है, तो उनको भी हम एक बार चेक करते हैं क्या ये रेडी हैं, क्या इनके पास कोई फिशिंग लिंक भेजा, तो ऐसा तो नहीं है क्लिक कर देंगे। तो ये इस तरह के एक्सरसाइज करने चाहिए, क्योंकि आप डूज एंड डोंट्स बनाएंगे, पोस्टर्स बनाएंगे, कोई देखता भी नहीं है डूज एंड डोंट्स को। अनटिल आप कुछ एंगेजमेंट एक्सरसाइजेस कीजिए, कुछ इंसेंटिव्स दीजिए, एक मॉक ड्रिल टाइप का कीजिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना बहुत जरूरी है कि SOP कि अगर इस तरह का क्राइम हुआ तो क्या करना है हमें, लोग को क्लियर होना चाहिए। क्योंकि पैनिक, जैसे स्पीकर सभी बोल रहे थे कि आपने अवेयर तो लोग सब रहते हैं, लेकिन अगर जब क्राइम होता है तो वो चंद कुछ सेकंड्स इंपॉर्टेंट होता है कि आर वी रेडी, क्या हमारा दिमाग उस समय काम कर सकता है। तो अगर नहीं काम कर रहा है, एटलीस्ट वी कैन गो टू दी SOP और देखें कि SOP क्या बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी साइबर इंसिडेंट। साइबर इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत नई है इंडिया में, अभी धीरे धीरे आ रही है, बट आई रिकमेंड कि अब जितने भी बजाज हो गया, टाटा का, सबके अब साइबर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, जिससे आप अपने आप को इंश्योर, इंडिविजुअल को भी सिक्योर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी सिक्योर करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ इंश्योरेंस कवर जो है वो कवर करता है, जैसे रैंसमवेयर, कि जब रैंसमवेयर से आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो गया और आपका एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो उसको अल्टीमेटली कैसे मिलेगा, आपको उस बंदे को जिसने हैक किया उसको आपको पैसा देना पड़ेगा।
और पैसा वो डिमांड करते हैं अच्छा खासा। तो अगर डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा पैसा तो वहाँ पे आपको इनको साइबर इंश्योरेंस कंपनी उस अमाउंट को पे करती है और आपका डेटा तो उनके पास नेगोशिएटर्स है और ये एक नया एक तरह से वर्टिकल आप समझ लें कि ये चालू हो रहा है। सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स की बात कर लिए तो इन ब्रीफ की यही हमें ज़रूरत है, रेगुलर ऑडिट, डेटा को जो है उसको एनक्रिप्ट करना, डेटा इन ट्रांजिट, डेटा एट रेस्ट हमें सबको एनक्रिप्ट करके रखना है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान ज़रूरी है और कुछ गड़बड़ हो जाने पर रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ मैं एंड करूँगा, 2 मिनट और लूँगा आपका। रिपोर्टिंग चैनल्स बहुत सारे हैं, ऑलरेडी स्पीकर्स ने बताया, cybercrime.gov.in नंबर 1, 1930 नंबर 2। इसके साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, अगर कोई बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, इंस्टाग्राम बेस्ड बिजनेस है और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा मेरा, तो इन दैट केस आप प्लेटफॉर्म पे जाके डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। हर एक अंडर आईटी रूल्स 2021 की जो है अमेंड हुआ है, उसमें हर प्लेटफॉर्म को एक ग्रीवांस ऑफिसर और भी एक टीम पूरी अपॉइंट करनी होती है ताकि आपका ग्रीवांस वो टाइमली हैंडल करे। अगर वो टाइमली आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है तो एक और वेबसाइट आप लिख लें, वेबसाइट का पता है GAC, ग्रीवांस एपलेट कमिटी का ये वेबसाइट है, gac.gov.in। ये भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर है। अगर आपका प्लेटफॉर्म, आपका अकाउंट हैक हो रहा है और ये हो रहा है, प्लेटफॉर्म जवाब नहीं दे रहा है, आप स्टेट जाइए, वहाँ पे GAC के पास पावर्स है कि प्लेटफॉर्म को पनिश भी करें अगर आपका वो टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत फोरम हैं अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का केस है। कोई महिला से जुड़ा हुआ अपराध है तो NCW को, बच्चों से जुड़ा हुआ अपराध है तो ncpci.gov, अलग अलग रिपोर्टिंग चैनल है जहाँ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सर्टेन गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि अगर मेरे साथ ब्रीच हो गया और मुझे पता चला ब्रीच हो गया है और मैंने नहीं रिपोर्ट किया तो दैट इज अ ऑफेंस। सो यू शुड रिपोर्ट द ब्रीच विद इन 6 आवर्स टू सर्टेन, अगर आपके साथ ब्रीच हुआ, ताकि सर्टेन भी आपको मदद कर सकता है। और एटलीस्ट टाइमली रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। DPDP एक्ट के अंतर्गत मैं आपको ब्रीफली आपको बता दिया है, MSMEs एंड स्टार्टअप्स आपको जानना जरूरी है कि आप डेटा अगर प्रोड्यूस करें या डेटा गैदर कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने होंगे। एज अ एंड यूजर, मैं अगर आपका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ तो मैं आपको, मेरा राइट रहेगा कि मैं आपको बोलूँ कि मैं डेटा डिलीट करो और आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये सब कंट्रोल्स लाने की जरूरत है, बहुत सारा ये मैं थोड़ा रश कर रहा हूँ, डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल्स लाने की जरूरत है। और अगर आप ये सब कंट्रोल्स नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यू कैन बी पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर इग्नोरिंग दोज पर्टिकुलर गाइडलाइंस। और लास्ट में ये निहित प्लेटफॉर्म, मैं थोड़ा रश किया है प्रेजेंटेशन में, बट यू कैन हैव अ क्विक लुक एट निहित। अभी प्लेटफॉर्म इज गेटिंग अपडेटेड, तो आप थोड़ा सा टाइम लें उसका, मतलब आई थिंक इन अ वीक 10 days टाइम आपको बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएंगे निहित के बारे में। नॉलेज शेयरिंग सेशंस होगा, आपके कोई भी क्वेरीज हो सकते हैं अबाउट safety, security, privacy, you can reach out to us on this program, and a lot of tailored resources also that will come. ये बुक हमने 2020 में निकाला था, IIT इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स साइबर पीस हमने मिलकर निकाला था इस बुक को UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ मिलकर, जो कि जस्ट फोकसिंग ऑन MSMEs एंड स्टार्टअप्स, और क्या कंट्रोल्स होना चाहिए, क्या सर्विसेज होना चाहिए, क्या गाइडलाइंस होना चाहिए, आपका स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, साइबर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी कैसा होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दैट हैज बीन कवर्ड। अब इसको हम अपडेट करके जल्दी रिलीज करेंगे हम। With that, I'd like to end. I don't know if I have time for question and answers. Other, yeah, sorry. अगर आपके कुछ, yes, please. आपका लखनऊ में ही अभी एक यूनिवर्सिटी है, एवरीवन नो अबाउट UPTU, जिसे कहते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी। उसमें 190 करोड़ का जो है, 120 करोड़ का जो है एक फ्रॉड हुआ और 119 करोड़ जो है वो रिकवरी हो गई। दैट इज़ फाइन की रिकवरी हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि ये सारी एग्जीक्यूशन, मैं ये कह रहा हूँ कि आफ्टर एग्जीक्यूशन देन वी हैव टू स्टार्ट द एक्शन। मेरा सिर्फ ये है, बैंक्स जो है they have not checked checklist. एक checklist होनी चाहिए, at least 90% checklist if they have to fulfill, then they have to start the procedure. तभी वो action next stage पे होना चाहिए।
सेम विथ मैं कि बैंक से मेरी ये अगर बैंक के यहाँ भी हो तो फ्रॉड होने से पहले देयर आर 3 स्टेजेस बेसिकली, बिफोर फ्रॉड, एट द टाइम ऑफ फ्रॉड एंड आफ्टर द फ्रॉड्स. तो एट द टाइम ऑफ फ्रॉड्स जनरली बैंक्स क्या करता है कि बेचारे के साथ अगर 2 लाख का नुकसान हो गया तो आपको एक मैसेज कर देता है, वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है, और मैसेज करके बता देता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकल गए. दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन पब्लिक क्या चाहती है कि मेरे साथ जब फ्रॉड हो उसी समय होने वाला रहे, उस समय बता दे कि हाँ भाई आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, देन यू हैव टू टेक सच टाइप ऑफ एक्शंस और यू हैव टू टेक सच टाइप ऑफ प्रिकॉशंस. सेम विद द सल सर अभी चले गए, पुलिस डिपार्टमेंट से थे, मैं छोटा सा उनसे जनरली हम लोग कई ऐसे केसेस भी देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत सी चीज़ें डिस्कशन भी होता है. इन्हीं के डिपार्टमेंट से एडीजी हमारे लखनऊ के हैं SM थर्डे साहब, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी कोर्स किया, तो उसमें भी एक कोर्स था. सर से हम लोग ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट को आज तक कभी मैंने नहीं देखा कि कभी पुलिस आगे और चोर पीछे. चोर आगे रहता है, पुलिस हरदम पीछे 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 पीछे. वही ये भी तो हो सकता है कि चोर चोरी करने वाला हम उसको पहले पकड़ें, चोरी हो जाती है तब हम स्टार्ट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन. वही तो मेरा यही है कि सिर्फ कि थोड़ा सा इसको हम किस तरह से सॉल्यूशंस को जो है बिफोर एग्जीक्यूशन, प्रॉब्लम हो जाने के बाद तो हम सॉल्यूशंस तो देते ही हैं, ठीक है, दैट इज फाइन, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका कुछ इस तरह का सॉल्यूशंस आए, और जो प्रॉब्लम्स हैं देयर इज नॉट अ सिंगल सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, क्योंकि हर प्रॉब्लम की अलग अलग स्ट्रेंथन है, हर प्रॉब्लम अपने में यूनिक है, और हर प्रॉब्लम्स का सिंगल सॉल्यूशन, देयर इज नॉट अ सिंगल फ्रेमवर्क दैट इज पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एनीवन. राइट, दैट इज नॉट पॉसिबल. मतलब वो संभव नहीं है. एंड एवरी सॉल्यूशन इज नॉट 100% रिलायबल आल्सो. कोई नहीं कह सकता कि 100% रिलायबल है. अगर कोई कह रहा है दैट इज 100% प्रॉब्लम. तो सो थैंक यू, इट्स अ नाइस प्रेजेंटेशन बाय विनीत कुमार. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यहाँ पे एक्चुअली जो हम लोग बात करते हैं, हम बात करते हैं 3 स्टेजेस की. पुलिस का, मैं खुद पुलिस में कुछ टाइम रहा हुआ हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड चैलेंजेस भी होता है पुलिसिंग के साथ. बहुत बार सर्वाइवर्स आते हैं, बोलते हैं हमने तो रिपोर्ट किया, 1 साल निकल गया, कुछ मिला नहीं वहाँ पे. बट क्या है कि साइबर स्पेस जो है वो आपका कोई बाउंड्रीज तो है नहीं. जहाँ डेटा अगर क्राइम बाउंड्री के बाहर गया तो हमें जाना पड़ता है एक प्रॉपर प्रोसेस के, जिसका नाम है एमलैट. अब एमलैट का अगर प्रोसेस का अगर देखें, हम आज के दिन में देखें, तो ऑन एन एवरेज लोग को 1 साल में पुलिस एजेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को डेटा मिल रहा है, अगर वो कोई अर्जेंट केस नहीं है. जैसे कुछ केसेस, जैसे बच्चे को अगर किसी तरह से परेशान किया जा रहा है, वो बहुत सेंसिटिव केस आता है, उसमें एमलैट के तहत आप तुरंत विद इन 4-5-6 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है, क्योंकि सब कंट्रीज उसमें ये करते हैं. बट नॉर्मल प्रोसेस में अगर जाते हैं, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो, किसी का अगर 5,000 10,000 रुपये निकला, तो उसके लिए आपको जब तक वो यहाँ से जाएगा रिक्वेस्ट, इंडिया से जाएगा, पहले कोर्ट से जाएगा, सीबीआई का इंटरपोल विंग भेजेगा, इंटरपोल से उस कंट्री के पास जाएगा, और वो कंट्री के ऊपर है कि मैं कोऑपरेट करूँ इंडिया के साथ नहीं. जैसे कुछ एनिमी कंट्री से हो रहा है, अगर वो कंट्री बोलेगा मेरे साथ क्राइम, मैंने मेरे नेटवर्क से यूज़ हुआ ही नहीं. तो इस तरह के चैलेंजेस हैं, और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब इन्वेस्ट कर रही हैं इस तरह की प्रोएक्टिवली, कि डिटेक्ट करके अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है और उनको लग रहा है कुछ सस्पिशियस है, जहाँ एआई का बहुत मेजर यूज आ रहा है इसमें, तो उसको इमीडिएटली उसको ट्रांजैक्शन को फ्रीज किया जाए. तो अभी इस पर चल रहा है. मैं अभी कुछ दिन पहले मास्टर कार्ड के फैसिलिटी में विजिट किया, तो उन्होंने दिखाया किस तरह से वो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करें, उस पर काम करता है. आई एम श्योर आने वाले दिन में इसके कुछ इफेक्ट्स मिलेंगे. बट एज ऑर्गेनाइजेशन आई फील हमें मोर प्रिवेंशन पे थोड़ा फोकस करना चाहिए. प्रिवेंशन, जितना हम लोग अवेयर रहें, अपने आप को प्रिवेंट रखें, वो I think the best solution है, क्योंकि response may take time. Response is not this. So we already, I've got the note to please close the session. So I would request, अगर आपके और कोई questions, queries हैं, तो please reach out to me on my email, और साइबर पीस निहित हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप जा करके हमें रीच आउट करें. हमारा यूट्यूब चैनल, आई एम लीविंग यू विथ अ रिसोर्स, कि आप साइबर पीस टीवी पे ज़रूर जाएं. और आज आप ये भी एक अच्छा हैंडबुक ऐसे तो बच्चों के लिए बना है, सीबीएसई के साथ हमने रिलीज़ किया है. सीबीएसई साइबर पीस अगर आप गूगल करेंगे तो आपको वहाँ पे वो हैंडबुक मिल जाएगा.
बच्चों के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये हमारे लिए भी रिलेवेंट है, जिसमें हम साइबर हाइजीन, अपना रूल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर क्या है, किस तरह से जाने और क्या अलग अलग इश्यूज को कैसे एड्रेस करें। तो इस बुकलेट को आप अभी CBSE के वेबसाइट पे वहाँ से डाउनलोड करें, और भी हम रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करेंगे टाइम एंड अगेन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग, इट वाज अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। Thank you, sir, for this detailed and insightful session. I'll request Mr. Hassan Yaqub, Director, Government Affairs in Mobi Group, to kindly present a token of appreciation to Major Vineet Kumar. Moving to our last session for this day, which is Fortifying the Future, Safeguarding Online Banking and Payment Systems in the Digital Age. I'll request our speakers for this session, Mr. Saransh Chaturvedi, Advocate Cybercrime and Managing Partner, Saransh Chaturvedi and Company, Mr. Rohit Mandiwal, System Architect and Designer, Softude Infotech Private Limited, Mr. Falgun Rathor, Cybersecurity Expert, the Times Man of the Year, and Managing Director, Cyber Octet Private Limited, to kindly join the dais. With us, we have Mr. Amit Dubey, who will be joining us virtually. He is the National Security Expert, Criminal Investigation, and co-founder, India Future Foundation. I'll request Mr. Saransh to kindly take the proceedings further. Thank you so much for coming up in this session. My name is Saransh Chaturvedi. I'm an advocate practicing in Lucknow High Court as well as in Delhi High Court. My core area of expertise lies in intellectual property law and the IT law as well. I have been listening to all those speakers earlier, and I feel that this session, perhaps this session, is very important. Not because of the very fact that banking is an important part or is a core areas of India's economic growth, but more so why it is important is because of the volume involved in that. I feel so. The volume of people involved in the banking sector is very important, and is very important in the light that almost now 70 to 80% of the users are there on mobile phones and using the digital payment system, right? So that is why this session becomes very important for us. RBI in its annual report of 2023-2024 mentions that there has been an increase of digital payment by 44% by number and 16% by volume, which makes us clear that there has been an increase of 300% digital frauds and 708% of banking frauds. That's the magnanimous level of how we are going forward towards the banking system. As I told you that I am an advocate and I practice in the Lucknow High Court, and I majorly take cases of IT, cyber laws and intellectual property laws. But I can say that I'm not at that level of expert who are there, or as I compare myself with the panelists here, I say that we have a combined experience of 40 years when we see my panelists in this session. And it will be a gross injustice for me to speak more on this topic because we have such a tremendous experts with us in this panel. But since being an advocate, since being preparing for the same, I feel that I will be giving you some few instances to make you all understand how we are lagging behind
not because of the technological interventions, but because law itself is not supporting you. I will give you an example with that. We have tons of regulations: IT Act, Banking Regulation Act, PDPR, few of the discussions have been done for PDPR as well, Aadhaar Act, and also some of the few more acts as well. What is important for a law, for a definition, for a crime? The important part is the definition part. What crime actually you commit is important. Now, if we talk about fraud, the word fraud has been used multiple times in the last previous sessions. If I ask where the word fraud is defined, nobody can answer it. The word fraud has not been defined anywhere, neither in the IT Act, neither in the IPC, which becomes Indian Penal Code, which now is the Bharatiya Nyaya Sanhita, now neither in the Indian Contract Act. So ultimately, this particular point of having fraud, if not defined, how you will go forward? The fraud word is mentioned 15 times in IPC but has not been defined. Same goes with the word bank. Let's say, for example, banking. The word bank has not been defined anywhere. Even in the Banking Regulation Act, the word bank has not been defined. The word banking is defined. In section 5 clause B, the word banking is defined, but not the word bank. Now, if we combine two words, banking, fraud, where it is defined? Nothing, nowhere. You will not even get one instances where you can find a perfect definition of what banking fraud is. The word banking is defined, which gives us an help that, okay, fine, banking business is this. So we can create or connect dots in the perspective that, okay, fine, this is the banking part, this can be fraud. But banking fraud per se is not defined. And hence it gives advocate tons of argument to make sure that my client has been granted bail. That is an important part which we need to understand. If it has not been defined, where you will file it, where you will prove that this perpetrator has been done. So this is a major loophole when it comes to the banking fraud or when it comes to the definition part is concerned, right? Also, one more thing I feel, the cyber crime, the cyber financial fraud will never come under a separate class of offense. If you will go and file your case for the cyber financial fraud, this offense, this complaint will be treated at the same line which IPC and other theft, mischievous activities has been treated. So there is no separate class of financial fraud. There is no separate class of offenses which deals with cyber financial frauds. Why it is important? The important part is, if you are not having a separate class of offense of cyber financial fraud, the cyber financial fraud always have a basic strong point of technological interventions. And if that technological intervention is not there, you will never be able to reach the particular case. You will never be able to reach who actually is the culprit. And that is what we are facing. The other speakers, the previous speakers said that there is a difficulty in reaching the person, there is difficulty in proving the case. That is the important part, because the law itself is not supporting you. That is the part. If the separate class of offense is being created for cyber financial fraud, it will be very easy for a person to conduct natural and a perfect investigation. But if the separate class of offense is not there, nothing can be done. You bring 40 years of experience of expertism, nothing will be there. The advocate, if he knows, he will take 2 minutes time to grant the bail to that person. That is the nuances and that is the loophole of law. Let's talk about IT law, Information Technology Act 2000. It is the primary Bible law for all the cyber crimes that we are discussing in the last 2 sessions, right? It is the primary law, but what happened? What is there? Cyber crime, hacking, theft, everything is being dealt under the IT Act 2000. Section 43 gives you access of computer resource stolen. 66 gives you the access of the dishonest inducing way of computer resources downloading materials. 66B gives you all sort of things. So ultimately, we have law, we have things in consideration, but what is important? Let's talk about the ambiguity and let's talk about the confusion that is created in the IT Act. And you will able to understand why we are discussing this, why we are not discussing arbitration, why we are not discussing transaction. It's because the law for those things are very good. The law for IT itself is so included in the loopholes that we are not able to understand how to go ahead with. So we have IT law, we have all sort of sections which defines pornography, which defines theft, which defines cyber crimes, which defines hacking. Everything is there. What is the loopholes?
the IT law per se, section 81 of IT law says that it will get precedence, but IT law per se works under the umbrella of IPC. Now, logic is, if the government has to come up with IT law, why it is actually connecting it with IPC? Data theft of 43A of IT Act is connected with 379 of IPC. The hacking of 43B is connected with 377 and 467 of IPC. The credit card fraud is being connected with 467 of IPC. Why it is so? In Hindi we say, बंदूक कंधे पे रख के चला रहा है किसी और के. Why it is so? If the IT Act is so capable, why we are considering IPC as a part that, okay, fine, we are putting all focus on IPC and no IT law can be considered as a whole as per se is concerned. So that is important part. Why it is so? Because of the fact that the lawmakers at that time when they made IT law was thinking, or either I can say, or rather I can assume that they were not even assuming the level of the magnanimous level of the cases that will fall under the IT Act, right? So that is the level which we have to focus and which we have to see about. That IT itself is not capable of understanding, or itself is not capable of seeing what law is actually there. Third, but not the least, if I will just say so about the IT Act, there is also one of the very strong point of loopholes. The cyber crimes are bailable offense. You just conduct a cyber crime. You just do whatever cyber crime you are doing, but it will take 5 minutes time for an advocate to grant you bail, because the IT Act, the cyber crime, as a matter of right, are bailable offense. So ultimately, if you are getting bail, it will take hardly 1 day time to tamper all the evidences. Finished, done, khatam. So ultimately, the law itself is helping the perpetrator to conduct all sort of cyber crimes. And if they are falling prey to the crimes, if there is some sort of complaints against that person, the IT law itself is helping that person to, okay, fine, go ahead, you will be getting bail, you will be getting all sort of understanding about having the law, having the perspective application, but you will be getting bail and you will be getting ample time to destroy the evidences. This is a major loophole of the IT law, right? Second, some of the speakers also was mentioning about the spam. We have no law regarding spam. IT law doesn't talk about spam. This is an uninvited mail. Australia, USA has anti-spam law. Australia has also a spam law. The uninvited mail should be restricted, but it has not been restricted because there are no law. Spam is not even being mentioned under the IT Act. So last but not the least, no provision of criminal breach of trust and misappropriation is there in IT law. So these are some of the loopholes which I wanted to tell you that why or so, even if you are bringing a very good expert on the table, the law itself is not supporting you. And how the law is not supporting you, how you will get through the case is something which we need to focus, or which we as an advocate are confused about, right? So it is a food for thought, because ultimately what expert you want? The only thing that you can do, as the last speaker was saying, was precautionary measures, because law till date is not supporting you. I will also give you a very good example. Section 66D, identity theft, misrepresentation. It means you are representing yourself as a person, as another person, and downloading all the information. Section 66D creates an offense of identity theft, but it says it does not mention fraud. So ultimately, what happened? Conclusion is you are having identity theft, but that identity theft is not at all a consequence of identity fraud. These are all the loopholes. So ultimately, the important part is you have to have a strict compliance of law, and in this case, the compliance, more than that, even the law is having a major loopholes, or a major thing like the law is itself giving the person a full agenda to go take bail and set free. That is the most important point. As I told you, I will not do injustice to the session, and I will ensure that this session is quite interesting for you all. So I think the first speaker of this session is Mr. Amit Dubey ji. Amit Dubey ji joins us online, and he is having some health issues. So I think Amit Dubey ji has joined. If not possible, yes, Amit Dubey ji has joined. Amit Dubey ji specializes in digital forensic investigation and cyber awareness training.
He has been instrumental in securing system critical business information from cyber attacks, where he has been successful in solving many cases for large corporates, organizations, and law enforcement agencies. He has been worked with multiple major MNCs like Samsung, Qualcomm, to name a few. And Mr. Dubeji, you are a regular speaker to multiple international conferences, forums, and leading news channels, and we are glad to have you here, despite the very fact that you're not feeling well, and I understand the same, but we are glad that you still have this good bond with CII that you are able to come up online. So, Mr. Dubeji, over to you, please. Thank you so much to everyone, and sorry for not being there. Thanks to Bharat ji for consistently following me for this, and that's why I'm here. So, friends, I'm sure it's running a good session here, and I hope you all are enjoying. And I'm a cybercrime investigator, so whatever I have learned in my life, I have learned through criminals. And I truly believe criminals are innovators. They always teach us something whenever I solve a case or a new human vulnerability, process vulnerability, or a technical vulnerability. But the core aspects of any cybercrime starts from a data breach. And that's why I always say that जब भी कोई साइबर क्राइम होता है उससे पहले एक और साइबर क्राइम हो चुका होता है, and we actually ignore that cyber crime. If there is any financial cyber fraud, if there is any corporate fraud, if there is any such social media crime, you always notice that before that there was another crime, which is a data breach, data leak happened. You get a call from an insurance company that I'm calling from. Somebody is impersonating. I'm calling from insurance company and I have your insurance number, I have your date of birth, I have your PAN card, other details, and then you start trusting that person. Or if the person gives you some of your personal details about a very personalized trip or something, which you have already requested to some of online trip booking website, or any such data which is only with the operator or with the bank, if anybody is sharing that data with you, you start trusting with them. So this is something which we have been noticing. I have seen lots of financial FIRs, financial fraud FIRs. None of them has asked your password. Nobody asks your password. They are interested to know your OTPs only. Password they already have. How do they get that password? So I'm sharing my screen and I'm showing you something just to have a glimpse of the information which gets leaked through various sources and reach to these guys. Friends, I have just searched Facebook on Google Play Store. And this is a place from where we install our applications. I'm deliberately referring Facebook, though you can test any other application which is in your phone, that what kind of data that has been collecting from your device. And then when you click on it, you will reach to this page where it will show you that what Facebook has been collecting from your device. Let's have a look at it and you would understand that what I'm trying to say here. Facebook has been reading all your emails, all your OTPs, all your MS and other in-app messages, which they have clearly mentioned here on Play Store that I'm reading it. Facebook knows how many applications you have installed in your phone, what you search, what kind of content you generate out of those apps. Facebook has been capturing all your locations, your approximate location, your precise location, so GPS, cell ID, Wi-Fi, everything. Facebook knows all your contacts, of course, we know about it. Facebook knows all your files and docs, so whether you are downloading it through WhatsApp, Telegram, Signal, email, if it is in your phone, Facebook has an access of all your personal, private, sensitive content. All your browsing history, Facebook has been keeping a record of your online activities, what you do, access, website, search, whatever. This is interesting. Facebook knows your name, email address, user ID, address. Now, this is your physical address. When you opened a Facebook account, did you give your physical address? Did you tell them your physical address? No, we never provide our physical address to Facebook. Then how do they know this? And they say that we know the physical address of all 5 billion people. Those are on Facebook. And when you change your address before it gets updated on Aadhaar card, it is updated on Facebook. So real time. And if you are living at 14th floor of a building or 17th floor of a building, Facebook says that I know your exact address, that you are at 14th or 17th floor. So this is not about GPS location which you are sharing. It is about your actual address with PIN code. Phone number.
Then Facebook says that they know your political or religious belief as well. So to whom you voted last time? What is your religious band? What is your sexual orientation? And this is not about being male or female. This is about being LGBTQ+. So to and other information. So there are many other sensitive details those have been captured by Facebook, though you may not be knowing. And they were not mentioning this before 2019. In 2019, when Cambridge Analytica happened, at that time, there was a case against Facebook in California court, and they were penalized for $600 million. And then they were asked to disclose these things, that what all data they have been captured. So all your financial information, user payment info, purchase history, credit score, and other financial information. Calendar, so to whom you meet, where, when, what. Health and fitness, how much do you sit on sofa, how much do you walk, run, and based on your age, what is your fitness? All your voices around your phone, they listen. All your sound recordings, if you're recording your calls, all your music files, other audio files, all your photos, videos. So basically they are spying you. And though they say that, yes, we have been collecting this data, but many of us do not aware about it. So the very first thing which I want to establish here in this conference, that we should understand the value of our data. TikTok's owner is 26th richest person in this world. Do they make some life-saving drug or vaccine? No. They have a free application which shares videos. That's it. And he is 26th richest person. WhatsApp, when it was formed in 2009 and sold in 2013, within 3.5 years, it was valued $19.3 billion. WeChat, when it was banned by government of India in 2019, it was valued $500 billion. And what is the GDP of Pakistan? $250 billion. So double of that is an application value of China, which is free. And it is banned in India. Imagine if it was not banned in India, TikTok or WeChat, probably they would have been among top 2 or top 5 people, richest people of the world. Why so? Because of the data. They are valued for this data that they have been collecting. And not only, I'm not against any such application or utility app, but we should know about it, that what kind of data they have been collecting and what kind of threat it could create in future against us. If we are not aware about it, we are blind, and we are opening channels for criminals to actually try us for such kind of financial crimes or cyber crimes. And I'm not only so so with any other application, whether it is Google, you could see that Google has also been collecting so much data from our devices. Probably we may not be aware of it. They know all our passwords, they know all our contacts and everything, and of course our locations. Now, point is that when we share any such data to any such app, so these are my last many years of locations, probably from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Odisha, from Malaysia, Singapore, Azerbaijan, Saudi Arabia, Oman, Norway, Sweden, Denmark, UK, Spain, wherever I've been to and where I stayed, what did I do, in which hotel I was there, to whom I met. Everything is recorded of last 15 years. So as an investigator, if I seek data from telecom operator about someone, they normally share only of last 2 years of data because of the law. But Google and Facebook can give us this data beyond 2 years also. And that's what this new DPTP bill can help us to get or to use against criminals also, and also to protect us. First of all, because we have a limited time, so I would just set up 3-4 things over here among other panelists, and I'm sure this will help us to sensitize it more among people. We should understand the value of our data. If we are not valuing our data and sharing it ignorantly, we'll be trapped eventually. The purpose of this company is to collect this data is not to sell you something or to advertise you something. No, that they can do anyways. We know that if from morning till evening we see an advertisement of a particular soap, when we reach to shopkeeper, we ask that soap only. This happens because it is being trained in our mind. We all are the product of the data that has been fed to us since our birth. So if I'm here today as an Amit Dubey, actually this is not me. This is the data which have been used to train me. Each one of us
is a product of the data. We live lifelong that data points. And if this data point is manipulated, it can be used against us easily. They can decide. So when these companies, they are taking this data is not just to sell you something, but to control you eventually, because we all are the product of the data. If we are on internet for 12, 15 hours, 12 hours, and I know there are people, those are continuously on internet, all our behavior, all our observations, everything is controlled by them. Interest, like, dislike, hatreds, whatever, aspirations, what do we want to become in our life, what do we watch on OTT, everything is controlled. And that is the fear. If they can control us, they can control a nation. So I'll take my case rest here, and I'll rest here, and I'll request other speakers to continue on this thought-provoking dialogue, where we can have much more brainstorming inputs from each one of you, and then we can probably conclude some of the actionable points to the government of India. Thank you. Thank you so much, Mr. Dubey. We totally understand that your health-wise, you are not able to join us physically. And I feel that your physical presence is still needed in the session because we have your expertism. And I really thank on behalf of CII to please that you have taken out time, even in the online, as an online. And I also wish that you please be well, and next time we are able to see you on physical. I also request that please stay in the session, and because we have other two more experts and in this for the cybersecurity part. So please, if you can stay with us for the session. Thank you so much, Mr. Dubey. Thank you so much. Thank you so much. So ultimately, the presentation that was made by Mr. Dubey with regards to data protection, with regards to the importance of data, gives us a view. And I think, Mr. Dubey, if I'm not wrong, you are also in this cyber field for last 16 years. And me being an advocate, I have been also dealing cases, and not only the cyber security part, but I think the court in multiple cases as well has initiated and reiterated the importance of data, right? Because data has to not be shared with anybody, and how the protection of data can be done. Because ultimately the court cannot make a law on that sense, and whatever law actually it is there in India is what the court has to interpret with. But the importance of data lies a lot. And I really thank Mr. Dubey to bring up this particular more important part. Over to the next speaker, we have with us Mr. Rohit Mandiwalji. Mr. Rohit Mandiwalji comes with 15 years of rich experience as an IT professional. He has worked in a variety of domains such as healthcare, fitness, automobile, education, and his expertise and dedication has ranked him among top 4% of developers worldwide on Stack Overflow. He has been a certified Salesforce professional and has demonstrated his efficiency in Java, BlackBerry, mobile app development. Mr. Rohitji, we are glad to have you here, and we are thrilled to listen to your views on this. Thank you so much. Okay, so good afternoon, everyone. All right, so it's all time now, right? Everyone spoke a lot about things, about what's there, what are the threats are there, how to fix them. So before going to that, let me share something very quickly about me. So I am from the prevention side. My work is basically on the AI side and on the prevention side, that how to stop those things even before happening, right? So let me tell you a story, right? A very quick, very short instance. There is a company called Just Pay. I mean, it was a scenario of like 2020, when there was a data leak over there. In 2021, ethical hacker has leaked the information, and he confirmed that there was a leak of 35 million data over to the dark web. And can you guess how much people are bidding it for it? Over to Telegram for the $5,000. इस तरह से आपकी और हमारी इंफॉर्मेशन बेची जाती है ऑन अ डार्क वेब, एंड दिस इज अ डार्क रियलिटी. एवरीवन स्पोक अबाउट इट. सो गोइंग फर्दर, द फिलॉसफी इज कि आप घर चाहे कितना अच्छा बना लो, राइट, वॉट एवर यू मेक, इट्स इनकम्प्लीट इफ इट्स नॉट सिक्योर. Even the biggest fort needs a security, right? And security is not
something which can be done at a one time. It's an audit. For example, we all know that there are the CAs who do the audit once in a year. But unfortunately, in case of security, it has to be on a daily basis. Yes, on a daily basis. Be it automated, be it manual, be it by other means, but yes, it has to be done on a daily basis. So my presentation is split into like just a short presentation is split into that quick things like common security risk, which people already spoke about. So I'll give a very brief line about it. Then it's about advanced security strategies, regulatories and compliances, and leveraging the AI. How we can use AI, the artificial intelligence, to prevent from all this even before happening them. Well, so the common security risk everyone spoke is about that phishing attacks are there. People will mail you that this is from your bank, blah, blah, blah. That is the phishing, right? Second, it's the malware attack, man-in-the middle attack. Everyone loves the free thing. Free ka Wi-Fi mil gaya, free ka ye mil gaya. Everyone loves it. Even we go to the hotel, right? Aap Radisson jao, right? If you're booking a good hotel, what's your first thing? Yeah, Wi-Fi ka password de do. That's the first thing we do at the reception. And at the same point, aapko bhi nahi pata how your information is getting compromised. How your photos, which is on your phone, on your laptop, are getting synced on their Wi-Fi network. And one day you wake up with a surprise. And that too unpleasant surprise. So this is what the man in the middle, right? Social engineering, अभी जैसे सर ने बताया था, calls आते हैं, वो सारा होता है, SIM swipe हो जाता है, right? All threats are there, right? So I don't emphasize very much on those threats because everyone knows about it. I particularly jump on the solutioning part. So advanced security strategies. So everyone knows that वो कहते हैं ना जैसी बीमारी वैसा इलाज. So it's the same. Advanced problem needs advanced solution. And that too automated solution. So the first thing which I recommend to be over here and which we actually participate in our daily routine exercise while designing and architecting the softwares and the systems of banking, healthcare and all, these are the things which we follow. The first thing is the blockchain technology. Everyone knows about the Bitcoin, the cryptocurrency. They follow it everywhere. So there is the safest technology. It leaves always a footprint where you go. So there is the first thing. Then it's the artificial intelligence. 1 second. Sorry. Yeah, it detects the pattern. I will speak some more about it in the next slide. Then we have quantum cryptography. So we all know about the quantum computing. It's very much into the conceptualized phase and all, but there are two things basically. One is the hashing and one is encryption. Encryption is which can be decrypted. For example, if I say कि in a very layman's language, if I say today को आप code language में red बोलो, so जो अगला बंदा सुन रहा है, he knows कि if I'm saying red, इसका मतलब today है. This is encryption. What is hashing? Hashing इसके अगर मैं बोल रहा हूँ today, तो उसका मतलब से मुझे ही पता है कि वो today मतलब आज है, या उसका मतलब red है. Nobody else knows. So this is the two basic principles to distinguish over here: hashing and encryption. Okay. Then multi-factor authentication, biometrics, face ID, biometric, everyone knows about it. These are very much required, right? Nowadays, our core job is to integrate all those biometrics into all the mobile applications to perform this analysis, right? So we do not need to save anything. It's all driven from the root operating system of your device. So be it Android, be it iOS, it's there. Then we have the routine VAPT. Now that's a very interesting thing. VAPT is basically vulnerability assessment and penetration testing. In this, what we does, we use certain tools like Burp Suite is a tool, Charles Proxy is a tool, right? So we use certain tools like that. What they basically did, they basically assess or do a potential attack, right, on your application, on your website, and see how it behaves. And this has to be done on a weekly basis, because just like any antivirus, the database for the VAPT updates on every week and every moment basis. So with that, we know that, okay, these are the open flag items which are there and we have to address it. VAPT risks are taken at the highest priority. We recently did it for the Volvo VFS, that is Volvo Financial, VECV and Times of India as well for the VAPT analysis. That is a routine exercise which we follow with all our clients, so that prevention is better than cure.
Then cloud security. Nowadays, everything is moving on cloud. It was a time when people keep the things on their own premises. It's their first preference कि यार हमारा data तो हमारे premises में ही होना चाहिए. But if that is the thing, आप locker क्यों लेते हो? So you can consider locker as a cloud storage, जहाँ पे अपनी jewelries रखते हो, because you believe that bank is a much safer storage place than your home. Same can be understood with the cloud storage. Nowadays in India, almost by 2024 end, 80% of bankings are moving to the cloud. The data is in the next slides. So clouds are very much renowned. If you say in terms of AWS, Amazon clouds, Google clouds, Azure clouds, right? Go with these. These are having unbreakable securities. For example, in recent case of Volvo Financials and VECV, we are using IBM cloud, right? So I'm just taking an example. I can't name the actual cloud which we are using due to the security reasons, but yes, just for example. Then regulatory and compliances. So just like said by the first presenter, the speaker, GDPR compliance is there, which is majorly for the Germans to protect, to emphasize that how to protect their information over to there. HIPAA is another compliance that is very much regulatory for the healthcare system, right? So such compliances has to be there, and after building the system or such compliances, it has to be certified from the authorities so that nobody can play with your data. Then we have the payment card industry security standards, which is to store your information in a more protective way. This basically happens at the bank side, where they actually store the information in hashed format. If you recall, I said like a couple of minutes back, so only the customer knows what information is being stored. So even if someone is trying from the bank to fetch out your information, he can't do it. Now coming to the most interesting part of the presentation, that is the how to leverage AI. अभी AI को कैसे इस्तेमाल करें? हर कोई बोल रहा है कि AI ये है, AI वो है. But if you recall, एक कहावत है कि बोलते हैं जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे AI ही AI को काटता है. So for the potential threats, AI is the potential solution. AI crosses the AI. Let's see how. So basically, we have the adaptive authentication. Okay, let me tell you in this way. So nowadays, how the authentication happens, you put in the username, you put in the password, or you have your biometric, and that's authenticated. And that's a one-time authentication. अभी अंदर जाके क्या हो रहा है किसी को नहीं पता. एक बार आप घर में घुस गए तो घुस गए. What AI does, it does the repeated authentication. How it does that? It adapts the user pattern. For example, if you are pressing a key, right? आज सबके पास टच फोन है. If you are pressing a password, if you are operating the application, right? Touch phone के अंदर they have the sensors which can measure the pressure you are touching your phone, right? AI can sense that pressure and track that is it actually you or there is an unusual behavior. ये इतनी मतलब for example if अगर रोहित है, for example if I am using my banking application, for example let's say Axis Bank, I'm just taking an example, right? And if Axis applies the security of AI pattern detection, it will sense that यार रोहित 2 साल से एप्लीकेशन यूज कर रहा है. जब वो यूज करता है तो उसका यूजुअल प्रेशर जो होता है वो कोई सर्टेन यूनिट में होता है. लेट्स सपोज 2 का प्रेशर अप्लाई होता है. दिस टाइम ही इज अनयूजुअली अप्लाइंग लाइक 4 का प्रेशर या 5 का प्रेशर while pressing the keys, while interacting with the application. It senses that there is something fishy because this is not normal. This kind of routine authentication is happening in the background with the AI, and this is how we can leverage it. The first thing. Then behavior biometrics. Biometrics are there. We have the facial authentications are there. These things are managed in terms of AI pattern and other analogy over there to assess that okay, is it the legit user or not? Someone fake is going to be there or not? Then AI driven threat detection. So AI का best part ये है, it can work simultaneously on a large set of language model and data sets that we call the LLM, right? So what it does, let's suppose if I'm taking Axis Bank an example again. So if there is a fraud happened in one of the account of Axis Bank, AI has detected that pattern and it rapidly at the same time on the same moment it applies the same pattern on the other ongoing transactions as well. And if it observes the same suspicious behavior, it can simply go ahead and block it. For example,
at the Amazon side, if you order a same product on the second time, it asks you that, do you really want to order? You have just ordered it. These are the AI-driven security patterns which we can apply over there. It also functions on the real-time detection basis because see, it's a earlier age, right? कि आपने आज डेटा डाल दिया वो कल तक पहुंचेगा या सर्वर का प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है. AI is well advanced. It work on humongous amount of data on a real-time basis. उसको इतना टाइम नहीं लगता. That's the power. It processes all your information in fraction of seconds with all the behaviors and everything and tell you, boss, this is not right. You are not the authenticated user or you are getting trapped into something. Now, as by the time we are having lots amount of data with us, and it can also have that, okay, there are some like man-in-the-middle attacks or other things also happen. So such things will also be covered by the time over there to prevent from the AI. Okay, so this is some general banking references who are going to adapt the AI, the cloud computing by 2024 end. It's about my quick company, quick details, my client list, and that's it. Thank you. Thank you so much, Bandewalji, for your excellent presentation. And I was speaking in one event last month where I spoke about artificial intelligence and its impact on law. And Mr. Mandewalji, you were quite correct when you said that leverage AI. Means I spoke in that event where I said that AI can be used for betterment and AI can be used for destruction as well. So ultimately, it's important that how you can leverage AI, and more than that, the awareness and the technological interfaces, I think most of the people are not aware. So awareness is more important, but how can we leverage AI is what is the need of the hour. So we move on to our next speaker. I am very glad, first of all, that I am getting this opportunity, sir, to introduce you. He is my friend, my mentor as well, and I used to bother you as well for my small advising cases. So the next speaker is Mr. Falgun Rathorji. Falgun Rathorji is a cybersecurity expert and a managing director of Cyber Octet Private Limited. He comes with 15 years of rich experience and has been listed in top 10 certified ethical hackers in India by Silicon India and also top 10 cyber cops by India Today. And nonetheless, he is the Times Man of the Year. He has been a speaker at HackCon 2012 and as well as the Hack 2012 and the first Indian to be featured and on cover page of Pen Test magazine. Mr. Rathore has been a delegate to securing Gujarat International Conference and a speaker in more than 15 universities. Mr. Rathore, as I told, I am very glad, and you are also my friend, you are my mentor, and I am really thrilled to listen your views on cybersecurity data protection, more so on the software side. Please give a round of applause to him, please. Thank you. I just got an update from Google. It's been 1 year. Again, Lucknow. Thank you so much, CII, Bharatji, and the whole team of CII for inviting me again for this wonderful session. So, exactly, I think so. 21st June last year, I was here talking about cybersecurity, ethical hacking, and a cybercrime investigation. So that's my brief profile, actually. It's been more than 15 years I've been into this industry of cybersecurity. I started with hacking tips and tricks from Orkut. How many of you people are aware about Orkut? Yeah, most of. First social media network, and people started connecting to the people from the Orkut itself. And I'm sharing, like, a lot of people used to ask me this question, how I started. And I was like, looking forward to something interesting, थोड़ा मजेदार हो और लैपटॉप पे बैठ के आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. So IT was definitely one of them, but I was looking forward to the futuristic opportunity actually. आज से, like, this is the normal thing that I have identified even in today's generation. What people are doing is they are investing on today. They are not investing on the future actually. They are looking forward to the career opportunities which are having a lot of scope as of now, not in the future. Let's take an example, quantum cryptography.
Quantum cryptography is the thing where we need to invest right now. If you want to be a leader, you should have a vision after 15 years or 10 years actually. So that's how I started Googling up, finding a few communities on the Orkut, and I started learning a lot of things from the Google and Orkut communities. Then I got approached, like I started connecting with law enforcement agencies. I started working with like law enforcement agencies from Maharashtra, state and national level agencies as well. And I was involved in a lot of high profile cases for the investigation. I was also involved for some of the cases which are happening in the stone pelting. Sir ने एक चीज बताई थी last session में, like proactiveness. In India we have this thing like we are more reactive rather than proactive. Yes, कुछ होता है बाद में देखेंगे. So that's the thing, because we don't calculate the risk. There is only one agency which is calculating and which is giving you the suggestions, that is LIC. Yeah. But other than this, we are not doing any kind of risk management, which is right now basically, which is part of most of the compliances as of now. Most of the standard they are having, you need to have the standard-based practices for the risk management. And so proactiveness, which is very much important. And when I was working with law enforcement agencies, I have identified they are very much proactive because I was mostly involved in finding out the leads for them rather than doing the investigation. Let's take an example. I was involved in ISIS related cases for identifying what kind of books they are they are having and teaching to the people who are there, and a lot of other things. Then stone pelting, which was happening in Kashmir. So my task was to identify the people who are going to be a part of that stone pelting activities. So before they start, I need to identify a lot of things with the help of social media itself. So open source intelligence, I was involved in open source intelligence, but as of now, there have been a lot of tools which are available in the market, like dark web monitoring tools are also available. There are open source tools available. There are premium tools available. So 10 years back, it was a very difficult scenario. Even I was involved in one of the case with Mumbai police, where we were able to identify one of the terrorists, Sayyid Zabuddin Ansari, or Azam Khan. So again, there have been a lot of cases. So that's my brief profile, and I'm listed in India's top 10 ethical hackers. I've been involved in like taking sessions in different universities. Just recently, I had a session in Hertfordshire University, UK, as well as American University for Emirates, Dubai, and I was also, they appointed me as a board of advisory for cybersecurity engineering courses that they are launching actually. And I started with training segment. I'm a pure trainer, and in the year of 2009, we started into the training segment. And the things that I identified, basically, I would be talking about three important things. The first thing, that's a skill gap that we are having. So the education nowadays in engineering field or cybersecurity, the most important thing which we are missing in terms of education, we are not focusing on the skill sets. Rather than we are more focused on theory or either practical. अभी होता क्या है, आपको practical आता है. I have interviewed and you guys have interviewed n number of candidates. They are having a lot of certification. They are having very good very good certification, engineering degrees, maybe BCA, BSc, a lot of masters, but they are not having good skill sets. And in practical industry, we require the skill sets actually, yes or no? And that's the thing that we should look forward to. So like I have been receiving, and you guys have been receiving a lot of messages on the LinkedIn that you can get this much of certification by paying this much of amount. So these are the things where we are lacking, and the students also who are coming, they are looking forward to just get an opportunity in the market rather than getting the skill sets. Sir, कितने की job मिलेगी? कब job मिलेगी? No one asks for what is the content over there or who is going to be the trainer. Yes or no?
Have you ever asked in the universities or in any institute who is going to be the trainer? No. So these are the things. No one even read the content. Okay, what is going to be taught in the most of cybersecurity courses I have seen in the colleges, in the different universities. There are lack of topics which needs to be there. Actually, they don't have a knowledge about OSI model, and I'm going to teach them how to hack into the network. How it is possible? Is it possible? The basics are very much required. And if basics are not there, then practical is not going to be playing an important role. Nowadays, most of the people, let's take an example. There are a lot of chat GPT, AI-driven tools which are available. You can perform vulnerability assessment, penetration testing. They are aware about the tools, but they don't have the logic behind it. See, the most important thing when I go to the companies, I asked them, almost all the big companies are having very good tools. Yeah, they would be having Bobsuit, they would be having Nessus, Nexpose, and very good premium tools with them for cybersecurity engagement and everything. But the person who is going to manage those tools, they are not aware how to manage it. You're having good firewall, but you don't know how to manage those firewalls, how to create the policies, how to create the proper rules. Okay, even if you are having ransomware, I know how not to, like basically the attacker would not be able to take my data. It would be infecting your networks, it would be infecting your systems, but I know how to block the data getting uploaded on the dark web, because whenever the ransomware is getting like you are getting infected from the ransomware, what attacker does is they collect all your data from your network and put it into dark web. Yes or no? And then they will be starting threatening you. So basically, skill sets is one of the most important things that we need to look forward to, and that even we need to tell our students to cope up with. The second important thing is, just recently, I became a managing partner in one of the startup that's in Sec Prism from Bangalore. And I have identified this thing when in 2013 we jumped into the service sector because see, if I'm going to be the trainer, if I'm not aware about the situations that can be created in the market, let's take an example. I'm getting a lot of requests on my server, my website is getting down. I don't know practicality. I don't know actually through the practical or see, there are a lot of scenarios when the website goes down, application goes down, servers or the networks are not working. You are getting infected from different types of malware. You are getting infected from through phishing emails or something like this. So at that time, what needs to be done? It's not written anywhere. Even you may be having some of the SOPs or the policies, but actually there is no standard policy, standard framework. Even when you, most of people, now again, I will be talking about the students or we even, what we do is we Google, we do the YouTube, we search on them. Now every system is having, every network is having different tools, different firmwares, different operating system versions, and a lot of other things differ. And if it differs, then definitely the solutions would be different. Yes or no? That we already faced in the industry. So talking about secure software development lifecycle, and you heard about this? SDLC is everyone. Yes, everyone have heard about software development lifecycle, SDLC. But there is a new concept which is coming up, that's in secure software development lifecycle. Basically, the vulnerability assessment and penetration testing is the only thing that comes into the mind of any developer. No one will think about the training of the developer actually, from the security perspective. Yes or no? That even the senior developer, they would not be having the knowledge about the base secure coding practices. It differs from the programming language to programming language. If you are going to use Java or any other framework of Java, it differs. And there are a lot of already which are standards, there are best practices which are available on the internet through OWASP, because I'm member of OWASP, I'm member of ISACOM even, and a lot of other international communities. So there are a lot of material which is available, and no company is going to provide in training to the developer. They would be focused only one thing, that is project management, and secondary, creating the application for the client. That's all. The application which is in the working phase.
Yes? No one would be thinking about, okay, security testing would be a part of the SDLC in which phase? In the testing phase. Yes or no? But there is a concept of SSDLC. So from the training or the requirement gathering phase itself, the security needs to be there. So basically we call it as an secure by design. Yeah. And the third one, the most important thing which is coming up, which is going to be the future again, like earlier speakers already said, DPOs are going to play a very important role. When I talk about DPOs should have not just about a good knowledge about the cyber security, but also from the law perspective, also from the chartered accountant perspective. I hope you, because most of the terms, keywords that we are going to hear, that would be from the perspective of legalities. So we should attend lot of sessions which are actually happening across the internet. I'm member of DSCI as well. That comes under NASCOM, Data Security Council of India. So there are a lot of certifications which are going to come up in the nearby future. So these are the things where we should invest. And learning from my perspective, it's a continuous process that I believe. Because awareness is the most important thing as of now. We need to get aware about the things which are happening in the industry. Because as like your software gets an update every day, we also need to get update on an every day. Yes or no? So that's all from my side. Thank you so much. Thank you so much, Rathorji, for your excellent presentation. I certainly feel that the lack of awareness is important. And Mr. Rathorji, you said about the proactive nature. And since I am also been dealing in that, we as a part, I will not say this, perhaps it might be derogatory, but we as a part of being an Indians, we feel that, okay, we will be extractive but not proactive. And I totally second with your thoughts, sir. I feel that we have, Bharatji, if we have 2 minutes question Q&A. So we can take a couple of questions. Anybody who is interested in having a question, please, sir. So basically, I come from the background with the carbon financial markets. So I have few questions. Like we are basically, you can call us startups. So we are leveraging a lot of financial data from the MFIs, and we are actually working on the carbon market sector. So could you give us some insights, giving on the like regulatory frameworks from the RBI, that how can we as like a very basic organization can actually employ methods which can be helpful for our data security systems? Currently, we usually like we are on the cloud systems. So are there any like additional helpful insights where we could additionally leverage the technological aspects into our systems? Hello. Okay, so I think your question is how to, as per RBI guidelines, how to store the data in a more secured way, correct? This is your question. Yeah, and basically we also process things which are directly engaged to us. So we don't have any masking systems available for us. So like, can we be more proactive in like engaging the masking systems which are more like leveraged with the RBI guidelines, or like any third party could be leveraging that data without actually masking it out? See, first of all, I think the security comes in as a main task that you don't need to rely on the third party stuffs, right? If you actually want to build a secured ecosystem, you have to build your own algorithms, right? Your own encryptions and your own hashings, right? Yeah. So this basically captures at the time of defining the architecture. Example, in your case, when someone designs your system, like the architect designs your home, at the same way, when we design your system, that, okay, this is how the information flows, this is how it goes from this to this, there are a couple of parameters which we have to take care. For example, how to store the information. That's the first aspect. Second aspect, who is going to access the information? That's the second important aspect, right? And at the same time, how sustainable the overall system is. So these are a couple of parameters which we have to consider while drafting the architecture of your overall system to cater these things. Yeah, right. Any else?
Right. Hello. Even you can refer to ISO 27000 guidelines because most of the standards and most of the standards compliances, they have been adopted from the ISO 27000. So that's in best practice. Even RBI, all the cybersecurity guidelines are taken from ISO 27 itself. So that's a good one. Even they are recently in the recent revision, they have a data masking policy. So that's one based one you can adopt. And further few controls, there are 96 plus controls. So you can go one by one and you can identify, like generally it's for everyone, for all the organizations over there. It's not just one standard. You need to adopt multiple standards in order to identify, according to your organization, you need to identify the controls. Yeah. All right. So Because masking not always helps us to process the data further. Because once you mask it out, you only have other parties which could be accessing the data, and you are yourself devised of actually looking at the data, which is crucial for some of the businesses, I suppose, like for us especially. It's very crucial to look at the core data rather than masking it from the end-to-end pipelines. Yeah, yeah. So yes, comprehensive as well as you need to adopt a tailored framework. That's all. We've been looking for that. Thanks. One more thing I would like to add, that even if you see example of UIDAI, the Aadhaar card, initially they have only the Aadhaar number. Later फिर उसमें concept आया कि आपको masking करना पड़ेगा. So they hide initial some numbers and only last 3-4 digits. Now they come up with the virtual ID. So even masking is not the absolute solution. Virtual ID which maps to a different actual ID, that is the potential solution over here. all right. So I think we should move towards concluding if there are no such. Okay, please. You three are experts of its own field, I know. And Saransh Chaturvedi, you already told about the IT Act 2000. Just I want to